Kausal ji and Raghav Sharma ji. Students have become more excited. Yes. Now recording was started. So Denul, you can go ahead with the welcome speech. You welcome Wing Commander Sanjay Rajgopal sir, Saurabh Kausal ji and Raghav Sharma ji in the meeting. Welcome everyone. Okay, please proceed. Don't present the screen, dear. Don't present the screen. Let the meeting go in a nice way. Okay, every one of you. Yes, please, Denul, proceed. A very good morning, everyone. It's a pleasure to meet you, and I'm so happy to see you all together here. This is Dinulashmi, brand ambassador of Igniting Dreams of Young Minds Foundation. It is my pleasure to welcome you all and thank you to each and every one of you for being here with us today. We are very pleased to be able to welcome those of you who have been with us today for the workshop, and we are really happy to host this workshop on a wonderful place, Uttar Pradesh, with you all. Once again, I warmly welcome you everyone. On behalf of Igniting Dreams of Young Minds Foundation, I would like to express my sincere thanks to all of you who generously helped us to make this event come together to become a success. We could not have done it without you. I warmly welcome our Honorable Chief Guest, Wing Commander Mr. Sanjay Rajgopal sir. I feel grateful to welcome Mr. Saurabh Kaushal sir, Founder and Director, Smart Circuit Innovation Private and Limited. I heartily welcome South Sanskriti School, Bilaspur, Uttar Pradesh. Also, I warmly welcome Laila ma'am and Ravishankar Kumar sir, founder of IDYM. I welcome our dear students who are set to make this event a remarkable one. And our Igniting Dreams of Young Minds Foundation main aim is to promote space and satellite education for every young minds, that is for the entire student committee from any schools and colleges all around the world. While I hope workshop based on satellite technology will help you to improve your knowledge and skill, so I request everyone to utilize the golden opportunities of IDYM, take a shot and join with us on this wonderful journey. With all enthusiasm, I welcome you all once again to the momentous event. Today will be full of fun and learning. A big thank to each and every one of you present here for joining our program. Hope you will enjoy this workshop. Have a great day. Yes, yes, thank you, Denul. It was amazing a speech by you. And just I want to tell to all the students, the program schedule is like this. Firstly, will be addressed by a great wing commander Sanjay Rajgopal sir. He is the chief guest of today program. And along with Sanjay Kausal ji, he is a great scientist, young scientist. Raghav Sharma ji, because of some work, Sachin Sharma ji is not present here, but still we will miss him. So I request Wing Commander sir to unmute himself and kindly address the student. Numbers are very high, sir. So students are waiting for you. Please unmute yourself. Thank you, Mr. Ravi and Ms. Dinul. It was a really interesting opening that you did. Uh, can I request you not to present Harpal No one Chimai's? should present the screen. Please, everyone, don't present the screen. You are connected with the great scientist of India. Don't waste your time. Utilize the workshop for 1 hour. It's my request to all of you. If you do so many times, I will remove you from the meeting. Okay? So please don't do that. Yes, sir. You can present it now. Yes, sir. Please No, proceed. I am unable to present because Harpal Chima is presenting. Okay, I know, sir. Now he's Yes, okay. yes, Please. I will present. Give me a moment. Are you unable to see my screen? Yes, sir. I can see your screen, sir. Please proceed. Excellent. Thank you, everybody. It's a very, very wonderful day. Sunday is usually interesting. Today it has become much more interesting because of so many children that I'm seeing on the screen. Welcome to this workshop. Now, this thing that I'm going to speak is not going to be a lecture. I hope all of you understand English, or should I speak in Hindi? तो बच्चों मुझे 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 पूरा भरोसा है कि आप सबको अंग्रेजी आती होगी और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मैं बोलने वाला हूँ ये कोई लेक्चर नहीं है, ये कोई क्लासरूम की पढ़ाई नहीं है। वो क्लासरूम की पढ़ाई और लेक्चर तो टीचर्स देते हैं, हमें उसकी आदत नहीं है। हम तो फौजी हैं। आई एम अ सोल्जर
So if you ask me to climb a mountain, I can do that. If you ask me to climb a tree, I can do. If you ask me to cross a river, I can do. But if you ask me to give a lecture, I find it very difficult. So I'll assure you this is not going to be a lecture. This would be some kind of a communicational and conversational talk that we'll be having between me and you. I hope you will enjoy this. Okay, good. So we'll start with a small quiz. I hope all of you are ready. And since you all are children of the right age, you should be able to immediately give me the answers. Okay. So this is the first question, a very simple question. Look at the screen and can you solve this? And if you can solve this, please give me the answer. Say again. What's the answer? Sir, 19. 19. Okay, anybody else? 29. Sir, 33. 33. 24. 29, 24. Sir, 29. 29. Sir, 29, 29, sir. 29. 29. Sir, 24. 29, sir. 29, 24. Okay, thank 29, you sir. everybody. Thank you everybody. You all made an attempt. The answer incidentally happens to be 24. And I know you people have used your brains, and that is what I exactly want you to do. You need to keep your brains active. Let's see the next question. Can you name the first Indian astronaut? भारत से पहला कौन सा ऐसा आदमी था जो स्पेस में गया था? राकेश शर्मा. Excellent. अब बच्चे आपका नाम क्या है? Dinalashmi, sir. Dinalashmi. No, I wanted somebody else to answer. Okay, good. So the answer is already given. The first Indian astronaut happened to be an Air Force officer. Very good. Sir, Rakesh Sharma. Rakesh Sharma. His name was Squadron Rakesh Sharma. Leader Rakesh Sharma. Very good, Bacho. Thank you. So whenever you take the name of so whenever you take the name of any of the military officers, it is customary to also tell his rank. So at the time when he was flying on board Soyuz T-11, he was a squadron leader. So we call it Squadron Leader Rakesh Sharma. Let's go to the next question. Okay, who is the current chairman of Indian Space Research Organization, ISRO? I'm asking this question because we are having a satellite. Asia. Who is this person? सर कुछ आगे मिलते हैं. Say again. Sir, Excellent. His name is Dr. K. Dr. K. Again, it is important that you add that doctor. That's a kind of respect that we are giving to a person who has got a PhD in one of the sciences. Okay, good. This is the last question that I'm asking. I really do not know whether children of your age will be able to solve this, but if there are 5 ones, and I'm asking you to put any of the mathematical operators between them. So you can put an addition, plus, minus, into, division, or any of the mathematical operators. Can you make this equation right? क्या चाहिए तुमको? Hey, Babu. Okay, good. So I will just leave it at this. This is the one. This is one of the solutions. Children, I would request you to mute. Keep your mics muted so that we. तो आप लोग अपनी माइक बंद रखो. आपको जो भी बताना है सर को वो आप मैसेज बॉक्स में डालो, सर वहां से देख लेंगे. ठीक है बच्चों? Yeah, please proceed, sir. Sanjay sir, please proceed. सर म्यूट हो गए हैं. सर संजय सर आपका माइक म्यूट है. सर योर माइक इज म्यूट. कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ सर? संजय सर. He's facing some network problem. No, it was Sanjay not sir, your network. mic is muted. I think now it should be okay. Can you hear me now?
Okay, good. Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Please, please. Okay, good. So I am going to talk about a drone strike. How many of you heard of drones? Right? Drones are remotely controlled aeroplanes. So in today's times, when you go to any of the marriages, you find those quadcopters, helicopters with four spinning wheels on top, uh, four propellers. So that is called a quadcopter, which is remotely controlled. Something bigger than that is what you're seeing on the screen. This is called a Predator. This is a US origin remote controlled aeroplane. There is no pilot sitting in it. Remotely you control it, right? And this aeroplane, Predator, can be fitted with two Hellfire missiles. Now, Hellfire missiles are anti-tank missiles. So it can be launched on any of the targets, can be guided to the target, and you can explode it. So I'll show you a small video. Let us see if you can see the video. So this is an online video, so maybe there would be a small, no, it's all right. Okay, just watch this video. So you see, this is from the Predator. This camera is showing. It is showing that it's showing a place where you will see some terrorists coming out from that area. So you can see some of the terrorists who are moving out from there. The Predator's radar has actually locked on to these. Sir, you have muted. चिल्ड्रंस, Sir, you have आप muted. लोग मीटिंग में अच्छे से वो करो. कोई भी बच्चा अगर शरारती करना चालू किया तो मैं मीटिंग कुछ देर में ही बंद कर दूंगा. ठीक है, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ आप लोग को. यू आर कनेक्टेड विथ इंडिया के बहुत बड़े बड़े लोगों से आप कनेक्टेड हो. विंग कमांडर सर अपने साथ है, अपने साथ सौरभ जी हैं, राघव जी है, जो अपना समय निकाल करके संडे के दिन आपके साथ जुड़े हुए हैं. तो आप लोग मीटिंग में कुछ ऐसा मत करो जिससे मुझे फोर्सली इस मीटिंग को बंद करना पड़ेगा. मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ. Okay, children, were you able to see the video? आपने वीडियो देखा? क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ सर, आवाज सुनाई दे रही है सर. आप पढ़िए, आगे पढ़िए. Yes, sir. आपने वीडियो देखा? आपको वीडियो दिखाई दिया? Yes, sir. Okay, so उस वीडियो में I don't know how clear it was, but what I wanted to show was that a Predator aeroplane, which is remotely controlled, is so potent, it is so powerful, that with that remote control aeroplane you can launch missile attacks. And there have been many cases. A very recent case which has come to our notice was sometime about an year ago. This person whom you see on the screen, he's an Iranian general. His name was General Soleimani. When he was from Iran, he came to Iraq, and he was coming out of the Karan, yes, there is some student who is behaving not nicely. Karan something. I think I am going to remove you from the meeting. Good morning, sir. Good morning. If you find anyone, kindly remove them. This is principal from Sar Sanskriti School. Good morning, everyone. Yes, ma'am. I'm hearing, Actually, it is very unfortunate to see that this student, some student, not everyone,
They are behaving like this. They are connected with India, great air warrior, wing commander, sir, and Yes, two thank great you so scientists. much, sir. But I would request you, if anyone is misbehaving, kindly remove them without any intimation. Okay, ma'am. Thank you, Remove ma'am. them, Thank you. sir. Thank you. Yes, Thank sir. you, ma'am. Thank Thank you. you so much, sir. Sir, we Thank can you, sir. carry on. Please Yes. proceed, sir. Sanjay, sir, please proceed. Sir, you are muted. Sanjay, sir, please proceed. Please unmute yourself, sir. Dear students, those who are interested, they only will see. Rest all, if you are not interested, leave. Okay, fine. So it appears that somebody is actually muting me. I'm not muting myself. Okay, let's go. So I was talking about General Soleimani. He, one of the latest targets who was eliminated using a Predator unmanned aerial vehicle, UAV, a remote controlled aeroplane, right? So why I am talking about Predator is because in the news it only comes that there is a Predator which went and fired a Hellfire missile and killed General Soleimani. But what is more important and something which is very, very crucial to this operation is a satellite which was working behind it. I will show you a simple picture. Now, this is how drone strikes are controlled. So, on the screen, you can see two Predator aeroplanes. So, these are remote controlled aeroplanes. The remote control, the person who is controlling is sitting in a control station which is on the ground. On the left side, you can see some container. So, that is the place where the controller is sitting and he is flying the aeroplane remotely. Now this aeroplane could be flying very far away and the person who is controlling is sitting somewhere else. More important to this is the fact that the decision to fire is not taken by the person who is controlling. There are many people up the chain who have to take decisions. So usually what happens when the plane or an unmanned aerial vehicle is going to seek a target, what we do is we try to use its cameras and pick up the face and other features of that place. Then looking at the photograph, somebody has to identify that this is the right. Okay, okay. Wait, wait. Yes. Sir, you are muted. One student by sim or any child, we don't have it, such child. Sim work has I muted, have, sir. This can be seen. yeah, seen VRK and I have removed him from the meeting also. Yes, sir. Kindly do that because I have someone removed. else is joining from the same ID, sir. We don't have the such children in our school. I mean, Okay, ma'am, sim work is not I'm a just child. going to remove 10-15 a student now. I'm going to remove. Okay. Definitely, sir. You are free. Yes, sir. Yeah, please proceed, sir. Sorry for this. Actually, I have not seen such people in any workshops. This is our. No, not a problem, Mr. Ravi. I think if you have the admin rights, just mute everybody and keep only me as Yes, sir. unmuted. I have So, muted everyone. One student is there, Sim VRK. I have removed him. He was doing all the disturbance. okay, not a problem, not a problem. Let's not Sorry for that, bother sir. the other children who are intently listening to what I am saying. So I was talking about the control and the directing information comes from far away. Usually it comes from the Pentagon. Now Pentagon is the military headquarters somewhere in Washington, which is in North America. And this drone strike is taking place somewhere in the Middle East. How does the information flow from there? The information flows through satellites. One of the advantages of satellite is that you can the satellites cannot be taken over, it cannot be destroyed, you can't cut the lines, and therefore that communication link is very, very rugged and cannot be compromised. Almost all UAV strikes are controlled using satellites. I'll give you another small example.
uh, you children must have been small, but about 10 years back, there was a great terrorist called Osama bin Laden. That man was finally found in a city called Abbottabad in Pakistan. And when the US special forces were going to attack that compound, the whole thing was being watched live by President Barack Obama sitting in his office. How was this happening? It was happening because there was a dedicated, rugged, and uh, and wideband communication line between that place and White House. How does it happen? It happens through satellites. This one, I'm just giving you one of the examples of satellites. Another example that you can think of is, the Earth is curved like this. So Earth is a ball, and therefore there's a curvature. So in this curved place, if you are standing here, and if you are sending something, if you are using a torch and lighting, that light can go up to this place but cannot go any further. Because of the curvature, the light cannot follow the curvature of Earth. And a very good way of making sure that this torchlight reaches here is to put a reflector here. So you can put the torchlight here, the reflector will reflect and send it on the other side of the globe. And this is exactly what communication satellites do. Communication satellites are some forms of reflectors much higher in space. And therefore, you can send your information to the satellite will reflect it back, maybe amplify it, and then retransmit it back in this direction. And therefore, you are able to cover a larger portion of the Earth. It is said that with about 3 satellites, theoretically with about 3 satellites, you can cover the complete Earth. Great. Now this is just one of the uses. I will talk about some other uses. Let's talk about GPS. Now GPS, all of us know how useful it is. I'll tell you, when I was in the Air Force, maybe around 20 years back, when I was in one of the units in Rajasthan, we were supposed to go and do a reconnaissance. Reconnaissance means आपको जाके पता करना पड़ता है कि ये एरिया कैसा है, क्या मैं यहाँ पे अपने मिसाइल्स और रेडार को ले आके रख सकता हूँ. That is called reconnaissance. So I was traveling along with about 4 other people in a vehicle. On the map we know the place, but when you are driving, you really do not know where you are going. So you have to stop at different places, ask people, where will this road go? Will it go to this place? Will it go to this place? And believe me, we wasted almost 8 hours in that one recce to find out the right spot. Today, if you have a GPS, it is so very easy. Just click on that, and then you say drive to that place, and it will even tell you the road, which road to take. GPS is an extremely effective way a satellite is being used. So we all feel that it is a very simple thing, but there's a big complicated system that is happening. So GPS means there are some 21 satellites which are there, circling around the Earth, from where the information comes to our mobile, and that is why we see the GPS. In the absence of GPS, I'll tell you, there were a lot of soldiers who lost their way in deserts and died. There were a lot of sailors who lost their way in the sea and died, because there was no other way of finding out your route or direction, or just to know where you are. In the olden times, sailors used to look at the sky and do some kind of navigation using the positions of the stars. Now imagine if you are in a place and the sky is clouded. How will you find out your position? How will you navigate? GPS is a very, very powerful thing. And today, in military environment, GPS signals are used for a lot of targeting, a lot of accurate firing of weapons can be done using GPS. Okay,
Let me talk about the next one. We have got a lot of high resolution imaging. Now, satellite, if you can put a camera, it's a great thing, isn't it? So if you can put a camera and take a picture, you can get the picture of any place. So just to give an example, like we have got some, neighbors whom we considered not to be very friendly. For example, Pakistan. So if we get some ground intelligence input saying that in the north of Islamabad they are building some kind of tanks, and maybe it is going to become a fuel dump. How do we certify and be sure that what this information that has come is right or wrong? How we do it is we ask the satellite people to take a picture of that. Now what happens is these low orbit satellites, they are all polar satellites, so they go from pole to pole, and the Earth is also turning. So usually what happens is maybe the satellite will come above Islamabad only once in 6 days, for example. So if I tell the satellite people to give me a picture of so and so area north of Islamabad, he will first have to find out when will it come over Islamabad. One. Second, during that time, does he have any other task also? Does he have to take some more pictures and send it down? So based on that, I remember when I was in the Air Force, there were occasions when some of the requests of photography that we used to send would get rejected because there are other important things that the satellite is doing. Why I am bringing this aspect to you is, you children, the future of this country depends on you people. You people should come out and create a network of so many satellites that tomorrow, if any soldier wants to get some picture of some place, you should be able to give it the next day. You can do that only if you have your own satellites and far greater number of satellites. And it is possible. With great children like you, future is definitely going to be great. Okay, let's talk about something called night vision photography. Now this is another great thing that the satellites can do. Not just in the day, you can take pictures in the night. You can use some IR imaging, take night vision pictures, send it. It can be used in many ways. Oceanographic survey is another important thing. You can use the satellites to take pictures or pick up some information from, imaging information from the ocean. Can be used for a lot of things. If you realize almost 2/3 of the earth is covered by ocean, and ocean is full of resources. Fish is just one of them. In fact, fish is also a huge resource, but it is just one of them. If you can take images, even if you're talking about fishes, if you can take image and very clearly point out that the school of fish is at so and so place, the poor fishermen who live on the coastal area, they can go directly there and do their fishing and come. Today what happens is, in the absence of all this information, the fisherman actually is going out into the sea, into the vast ocean, and just trying to catch fish from wherever he thinks the fish is there. If you can do some kind of an oceanographic survey and give this information, imagine how useful it would be. Yes, ocean is full of resources. They say there are resources unknown to human needs as of now, which are available in the ocean. Might as well use satellites for this purpose also. Geological survey is another place where satellites are still being used. So you do some kind of an imaging based on different spectrums of the RF energy. You capture that, and it is possible to identify deposits of ores. It's a great thing. So if you can say that this is the place where if you dig, you will get coal. This is the place, if you dig, you will get copper. This is the place, if you dig, you will get lithium, for example. Lithium is a metal which has become extremely popular now. They are used in batteries.
and we do not have any resource in India. If we can use satellites for geological survey of and getting information of these kinds, critical information, don't you think the state of the country will change? Okay, DTH, direct to home, the television systems that you all would have seen 20 years back, we could never imagine this. You really do not need to have a cable running throughout the city. If you come to my city, you'll find that all the streets are filled with cables. If you have something like a DTH, you don't have to have a cable. You remove all the cable, the streets will become more beautiful. Just one of the example. Okay, satellite phones is another great example of, and a lot of people have using it. One of the flip side of sat phone technology is that the terrorists have also started taking satellite phones. Now what is happening is satellite phones, one, it is very, very difficult to break the code and get the information from there. And second, satellite phones, they will operate anywhere on earth. So if a terrorist is inside a thick jungle, he will still be in the coverage of the satellite. So satellite phones have got a flip side as well as users. Okay, good. Telemetry for medical purposes is just another thing that I thought I must speak about. If we can use satellites to transmit medical information using telemetry, don't you think a doctor sitting in New York hospital will be able to diagnose a problem that I have sitting somewhere in Kerala, or for somebody sitting in Uttar Pradesh? Using telemetry is another great thing. Okay, fine. So what I will do is, I think I have taken a lot of time. I will stop here. And before I stop, let me just speak about, or maybe I'll show you a small picture. Okay, can you identify this statue? So statue किसकी है? Statue of Unity. Oh, great. Who is this person? Sir, कुछ आगे Can you name मिलते yourself? Oh, great, great. Statue of Sardar Vallabhbhai Patel in Gujarat. Okay, excellent, excellent. So it's a Sir, the state of Gujarat. it's Sir, a Sardar Vallabhbhai Patel in Gujarat, Ahmedabad. बहुत सुंदर. अहमदाबाद नहीं है, थोड़ा दूर है वहां से, but it is in Gujarat. It's called the Statue of Unity, world's tallest statue, standing at a height of 182 meters, and it cost about 3,000 crores. 3,000 करोड़ रुपए खर्च करके हमने ये स्टैचू बनाया. मेरा सवाल सिर्फ आपसे एक. नहीं लेके जाना, फोन नहीं करना फोन. Somebody was not muted. Just please check your phones. Okay, so I just want you to know, tell me, how many of you think that this was a waste of money? 3,000 करोड़ में हम बहुत सारी चीजें कर सकते थे. हम हॉस्पिटल बना सकते थे, हम रोड बना सकते हैं, हम डैम बना सकते हैं, हम स्कूल खोल सकते हैं, कॉलेज खोल सकते थे. हमने एक स्टैच्यू बनाया. आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये गलत है? How many of you think that this was a waste of money? Sir, it was a waste of money. It was not. Sir, this is not a waste of money. As No, sir. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. थैंक यू बच्चों. आप लोग सब अपने कंप्यूटर को म्यूट कर लो. I'm extremely happy, and especially this happens when you're talking to children of your age. So you all. Sir, you have muted. I'll close this. बेटा आप लोग बीच में बात मत करो, सर को डिस्टर्ब मत करो. सर जो बता रहे हैं ध्यान से सुनो. और इसके बाद सौरभ जी आप लोगों से बात करने वाले हैं, राघव जी आप लोगों से बात करने वाले हैं. आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा बहुत सारी चीजों के बारे में, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखो. सौरभ जी अभी तुरंत विंग कमांडर सर का स्पीच खत्म होने वाला है, इसके बाद सौरभ जी का स्पीच चालू होगा. तो आप लोग प्लीज म्यूट करके रखो अपने आप को. Yes, sir. Fine. Thank you. So I wanted to say that you all came up and said that that was not a waste of money, and that is how you should look at things. The whole world will talk about negative things. They will say that was a waste of money. They will say the decision taken by the Prime Minister is wrong. The decision taken by Chief Minister is wrong.
whatever decision the mayor has taken or the panchayat president, people will find fault with everything that the other person is doing. But you as children must understand that something that has happened in the past, there is no point in criticizing that. Let's look at the positive things of all the decisions that have been taken in the past. That is one way of improving our positivity. I usually take sessions on soft skills development. So we do have sessions on improving positivity. Due to the shortage of time, I will not bore you with those stuff. It was indeed great talking to you. I think I've taken a lot of time. Thank you all, and I enjoyed being with you. And back to Ravi. Thank you, sir. Jai Hind, sir. It was like amazing speech by you, and I can see the numbers. It was going 110, 115, and it was amazing speech by you, sir. Student have a lot of fun. They really enjoyed it. They are responding really great. And now I welcome one of the great scientists of our country, Saurabh Kausalji, to please unmute himself and address the student. They are waiting for you. They are very excited to know your name. So please proceed with the gathering. Ji sir. Good morning to one and all present here. And special thanks to Engineer Ravi Kumar for inviting me from Igniting Dreams of Young Mind Foundation. So thank you, Ravi Kumarji, for inviting me in this particular session. And thank you very much to Wing Commander Sanjay Rajagopalji for sharing such insight about the space technology and the drone technology. So thank you very much, Wing Commander sir. And thank you to Principal Ma'am also for the school for inviting me to interact with your students. So thank you very much to all. So my name is Saurabh. I'm from Smart Circuits Innovation. And I will take your 5 to 10 minutes. And after that, my colleague, Mr. Raghav Sharma, who is a space expert or who is an expert in the CAN satellite, will show you some insight about space technology and the satellite technology. So students, let me start my, the talk with, I remember a few years back, I met with Dr. APJ Abdul Kalam ji in Delhi. मैं उनसे मिला दिल्ली के अंदर और सभी जानते हैं डॉक्टर कलाम जी को वो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं and he was the rocket scientist also and he worked in ISRO, DRDO and all. So जब मैं डॉक्टर कलाम जी से मिला दिल्ली में and he mentioned the one thing, knowledge makes you great. कि जो आपकी knowledge है वही आपको महान बनाती है, जो आपकी नॉलेज है उसी से आपकी पहचान बनती है. सो द नॉलेज मेक्स यू ग्रेट. सो मैं जब भी बच्चों से मिलता हूँ मैं उनको यही एक बात करता हूँ उनसे कि आपकी जो पहचान है वो आपकी नॉलेज से है. तो आपकी जो आइडेंटिटी है वो आपकी नॉलेज से है. सो यू मस्ट डू सम डिफरेंट वर्क. आप कुछ ना कुछ अलग काम कीजिए इस वर्ल्ड के अंदर, तभी आपकी पहचान बनेगी. जस्ट लाइक यू हैव अ रोल नंबर इन योर क्लासरूम. आपके रोल नंबर से आपकी पहचान है. Roll number 1 is this, roll number 2 is this. So in the same way, हम 21st century में रहे हैं. 21st century, the century of technologies. We have a lot of technologies in this century. We have space technology, we have artificial intelligence, IoT, drones, rockets and all. So बहुत सारी हमारे पास technologies हैं. लेकिन यदि आप अपने एक डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है वहां पर. तो इस 21st सेंचुरी में अगर हमें रहना है, तो एक कॉम्पिटिटिव इरा में रहना है, तो हमें कुछ ना कुछ न्यू इनोवेशन करनी पड़ेगी, न्यू क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी. और जब हम इनोवेशन और क्रिएटिविटी की बात करते हैं, डेफिनेटली जो सेशन है वो स्पेस टेक्नोलॉजी पर है यहाँ पर. सो मैं ये कहता हूँ कि जो भी चीज शुरू होती है, जो छोटी छोटी चीजें हैं, हम अपनी बुक्स के अंदर भी पढ़ रहे हैं. वी आर आई मीन स्टडीइंग द साइंस. और साइंस जो है एवरीवेयर इज अ साइंस. साइंस हर जगह पर है. अगर मुझे एक रॉकेट को भी लॉन्च करना है स्पेस के अंदर, देन देयर इज अ न्यूटन्स थर्ड लॉ जो हम अपनी बुक्स के अंदर पढ़ते हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ फिजिक्स इन आवर बुक्स जो हम अपनी बुक्स के अंदर पढ़ते हैं. अगर मुझे एक सैटेलाइट को लॉन्च करना है, उसके पीछे भी इतनी सारी साइंस है जो ऑलरेडी हम अपनी बुक्स के अंदर पढ़ रहे हैं. सो द थिंग इज Please unmute yourself. Saurabh ji, please unmute yourself. Sorry for this. I will just check the person who has done this. Sure. Sorry for this. No problem, sir. So I'm saying, being a student, this is the very good time if you can start working on some new things. आप कुछ नई नई चीजों के ऊपर काम कीजिए. For example, if I'm talking about rockets, ऐसा नहीं है कि स्कूल के बच्चे रॉकेट्स नहीं बना सकते, स्कूल के बच्चे सैटेलाइट्स नहीं बना सकते. Everything is possible. हर एक चीज पॉसिबल है. Even let me share one example with you.
there is one school with whom we are working in Chandigarh. The student from grade 6 onward, they have made a high altitude balloon satellite. उन्होंने एक satellite बनाई, and I mean, everything they have done. I mean, they have done the research and development, because research and development is very very much important. हम हमेशा ये सोचते थे, इवन जब हम भी स्कूल में थे, हम हमेशा ये सोचते थे कि रिसर्च वर्क तो सिर्फ साइंटिस्ट लोग कर सकते हैं, या फिर जो बहुत बड़ी बड़ी जिनके पास डिग्रीज होती हैं वो रिसर्च कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। जो इनोवेशन है, जो क्रिएटिविटी है, वो एक बच्चे के अंदर भी हो सकती है, एक स्कूल स्टूडेंट के अंदर भी हो सकती है, और एक स्कूल स्टूडेंट भी बहुत नई नई इनोवेशन कर सकता है, नई नई क्रिएटिविटी कर सकता है। So you can also make the satellites, you can also make the rockets even at your school. और मैं आपके साथ एक मेंशन कर रहा था, जो एक सैटेलाइट की मैंने आपसे बात की, तो उन बच्चों ने, जो 6th क्लास ऑनवर्ड बच्चे हैं, उन्होंने एक पूरा रिसर्च डेवलपमेंट किया कि हम सैटेलाइट को कैसे बनाएं, उस सैटेलाइट के अंदर क्या क्या सब सिस्टम्स होंगे। क्योंकि जब भी हम सैटेलाइट्स की बात करते हैं, देयर लॉट ऑफ थिंग्स, जैसा कि अभी विंग कमांडर सर ने बताया, जीपीएस, दैट इज अ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है जीपीएस के एक सैटेलाइट के अंदर। एक कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे हम दो लोग आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, वैसे ही सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट कम्युनिकेशन हम सैटेलाइट तक अपनी बात को नहीं पहुंचा पाएंगे, और ना ही सैटेलाइट अपनी बात हमारे तक पहुंचा पाएगा। तो इसीलिए कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। तो उन बच्चों ने एक एक छोटी सी सैटेलाइट बनाई, और जिस सैटेलाइट के अंदर दे हैव इंस्टॉल्ड वन कैमरा, उन्होंने एक कैमरा लगाया। वो चाहते थे कि हम आसपास की सभी इमेजेस को देखें कि धरती का जो कर्वेचर है वो स्पेस से कैसा दिखता है। तो दे हैव पुट इट वन स्मॉल कैमरा इनसाइड दैट, दे हैव पुट इट फ्यू सेंसर्स। तो सेंसर्स की जब हम बात करते हैं, सेंसर इज द थिंग्स व्हिच कैन सेंस द थिंग्स अराउंड अस। ऐसी एक डिवाइस होती है जो हमारे आसपास की चीजों को सेंस करती है। तो दे हैव इंस्टॉल्ड अ फ्यू सेंसर्स लाइक टेम्परेचर सेंसर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, कि अलग अलग एल्टीट्यूड के ऊपर कितना टेम्परेचर होगा, कितनी ह्यूमिडिटी होगी, कितना प्रेशर होगा। तो दे हैव आई मीन इंस्टॉल दिस टाइप ऑफ सेंसर्स इन दैट सैटेलाइट। और उन्होंने जो सैटेलाइट का आउटर स्ट्रक्चर था, दे हैव मेड विद द हेल्प ऑफ 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 21st सेंचुरी में हम लोग हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। तो अभी हाल ही में एक नई टेक्नोलॉजी आई, दैट इज 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी। इट मीन्स कि आप किसी भी चीज को 3D प्रिंटेड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ 3D प्रिंटर। सो उन्होंने जो सैटेलाइट का स्ट्रक्चर था, वो 3D प्रिंटर से स्ट्रक्चर बनाया, एक बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर बनाया, और उसके अंदर सारा का सारा जीपीएस, सेंसर्स, माइक्रो कंट्रोलर, जिसको हम ब्रेन बोलते हैं किसी भी सैटेलाइट का, उसको अंदर फिट किया। उसके अंदर बैटरीज को फिट किया। और जब भी हम लोग सैटेलाइट की बात करते हैं, सो अभी आपको राघव सर और डिटेल में बताएंगे सैटेलाइट के बारे में। लेकिन जब भी हम सैटेलाइट की बात करते हैं, तो सैटेलाइट क्या चीज है कि जिसको हम एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड, एक हाइट के ऊपर भेज रहे हैं, 1.5 लाख किलोमीटर ऊपर भेज रहे हैं, 100 किलोमीटर ऊपर भेज रहे हैं स्पेस के अंदर। तो जब भी हम स्पेस की बात करते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वायरमेंट डिफरेंस एज कम्पेयर टू द अर्थ। अगर अर्थ के ऊपर टेम्परेचर सपोज अब 24 या 25 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन स्पेस के अंदर टेम्परेचर आपका माइनस में हो जाता है। स्पेस के अंदर जो आपके पास टेम्परेचर है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, दैट इज टोटली डिफरेंट एज कंपेयर टू वी हैव ऑन अर्थ। तो जब भी आप स्पेस साइंस के अंदर रिसर्च करते हैं, दैट इज टोटली डिफरेंट। हमारे को ये इमेजिन करके चलना होता है कि स्पेस में कैसी कंडीशंस होंगी, हाउ दिस थिंग कैन एक्ट इन अ स्पेस। ऐसा हो सकता है कि जो चीज आपकी अर्थ के ऊपर चल जाएगी, वो स्पेस के अंदर नहीं चलेगी, बिकॉज वहां पे जो कंडीशन है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, दैट इज टोटली डिफरेंट। तो जब भी हम रिसर्च करते हैं इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, हम इन चीजों को अपने ध्यान में रखते हैं कि व्हाट ऑल द थिंग्स वी कैन कंसीडर व्हाइल मेकिंग अ सैटेलाइट, और जो भी हम चीजें बनाएं। एंड आफ्टर दैट दे हैव यूज्ड वन हीलियम बैलून। तो वो जो सैटेलाइट उन्होंने बनाई, वो एक बैलून की हेल्प से उन्होंने स्पेस तक भेजी, जो अराउंड 50 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फेयर में गया। तो वी हैव अ डिफरेंट स्फीयर्स, आइनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। तो जो स्टैटेलाइट थी, वो हमारी स्ट्रेटोस्फीयर में सैटेलाइट गई विद द हेल्प ऑफ हीलियम बैलून। एंड वहां पर जाकर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एक प्रेशर होता है, उस प्रेशर के कारण जो बैलून होता है वो बर्स्ट हो जाता है, एंड द सैटेलाइट कम डाउन टू द अर्थ विद द हेल्प ऑफ अ पैराशूट। एंड यू कैन कवर ऑल द आई मीन environmental data, images, so all these things you can do with the help of a satellite. So depending कि आपको कैसी सैटेलाइट बनानी है, इट्स अप टू यू कि पेलोड क्या होगा, आप क्या चाहते हैं, अकॉर्डिंगली यू कैन क्रिएट समथिंग। So it's totally depend on your imagination or depending on your innovation. So that's why
I always say to students कि कुछ ना कुछ इनोवेटिव वर्क कीजिए। आप स्कूल्स में हैं, दिस इज द राइट टाइम, आपके पास ये बिल्कुल राइट टाइम है। यू कैन कम अप विद अ लॉट एंड लॉट ऑफ इनोवेटिव आइडियाज, अच्छे अच्छे आइडियाज के साथ आप आगे आइए। एंड डेफिनेटली वी आर हियर। और रवि जी, मैं आपको डेफिनेटली कहूंगा कि इफ एनी स्टूडेंट वांट एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, स्मार्ट सिटीज इनोवेशन इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट एनी किड। इफ अगर आपके अंदर कुछ क्षमता है, देन डेफिनेटली वी कैन हेल्प यू। बिकॉज फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई हैव लर्न वन थिंग कि अगर आप अपनी कैपेबिलिटीज को शो करते हैं, ओनली देन पीपल कैन रिकॉग्नाइज यू। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोग आपके पास चलकर आएंगे कि ठीक है आई विल हेल्प यू। यू हैव टू शोकेस योर कैपेबिलिटीज, ओनली देन पीपल कैन स्टार्ट सपोर्टिंग यू। आपको वो हेल्प भी करेंगे, आपकी इनोवेशन इन एवरी मैनर दे विल हेल्प यू। सो एट लास्ट मैं यही कहना चाहूंगा कि दिस इज द राइट टाइम। आप कुछ नया इनोवेटिव वर्क कीजिए, नई नई रिसर्च कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको सीधा स्पेस साइंस की फील्ड में करनी है। यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द फील्ड ऑफ साइंस आल्सो। जो आप अपनी बुक्स के अंदर पढ़ रहे हैं, उस साइंस की फील्ड में भी आप बहुत कुछ रिसर्च कर सकते हैं। स्पेस साइंस में रिसर्च कर सकते हैं। देयर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन स्टार्ट विद। आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा टू द प्रिंसिपल and engineer Ravi ji, once this pandemic will be over, definitely we will try to conduct one satellite workshop in the school, ताकि बच्चे असली में उस चीज को बना पाए। जितना हम सुनते हैं उससे वो 100% चीजें कन्वर्ट नहीं होती हैं, बट जब आप अपने हाथों से चीजों को बनाते हैं, ओनली देन यू कैन नो द रियल insight about those things. So I hope after the pandemic will over, the school will start. So we will definitely come and we'll work with you, and you guys can make a small CAN satellite in your school, and we can launch those satellite also. So thank you Hats very off you, much. Saurabh ji. Hats off you, Saurabh ji. Your vision is really great, and definitely हम So जाएंगे और पूरी टीम के definitely, साथ जाएंगे। Thank you, definitely. Saurabh So ji. thank you very much to Engineer Ravi ji, Principal ma'am, for inviting me in this particular session. Now my colleague Raghav Sharma will give you more insight about the CAN satellite and space technology. So thank you very much. Yes, Raghav Sharma ji, please proceed with the gathering. Yeah, good morning, everyone. Thanks, Ravi Kumar ji. Thanks, Principal Ma'am, for inviting us for this session. So, good morning, students. So, students, you can type like your messages in the chat box. So, I'll read your messages also. And so now I'm start my screen sharing with you, students. Just give me a second. Students, can you see the screen now? You can type in chat. हाँ, अभी हाँ दिख रहा आ गया screen. I'll present it again. Just The wait. screen is not visible. हाँ बेटा हो जाएगा, अभी कर रहे बेटा, थोड़ा सा रुको, नेटवर्क से सब Sir, चल it रहा is है। visible. The screen is so visible. Okay, no, he presenting again. He's presenting again. Wait. We are all running with internet now, so you have to keep some patience. Yeah. There are also people who is like us only. They are trying to teach something new to all of you. Finding their time on Sunday. Sunday, everybody take rest. They are still finding time for all of you to give the knowledge. Yes, what we have learned, we want to share with all of you. So we have to salute them. They are great people. Kunal Chiller, you want me to remove you from the meeting? Okay, you are removed. Okay. सौरभ जी आप प्रेजेंट कीजिए स्क्रीन। अभी के बाद से जो भी स्क्रीन प्रेजेंट करेगा और किसी को म्यूट करेगा वो मीटिंग से उसको मैं बाहर करूंगा। सांधिया जैन, आपने भी एक बार म्यूट किया है, मैं आपको देखा हूं। सो डोंट डू दिस अगेन, ओके? आई थिंक सम yes, it's coming. Thank you. Yeah, it's coming. Raghavji, great. Yeah.
Sir, you are muted. राघव जी आ रहा है, आप अपना माइक ऑन कीजिए और या Now, am I audible to everyone? आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ आज आ रही है राघव जी। Okay, okay, fine. Sir, your voice coming. बेटा थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब कुछ नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, कभी कभी नेटवर्क का एरर आता है, तो आप लोग पेशेंस रखो। सब कुछ आपको इतनी सारी चीजें बताने वाले हैं कि आप सुनने के बाद अपनी पूरी आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। ये लोग इतने अच्छे हैं। Okay, students. Okay, students. So let's talk about the space. You know, whenever we talk about the space, हमारे दिमाग में एक चीज आती है, space, satellites और rockets. Fine. So starting satellites and rockets पढ़ने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, do you know who is the father of Indian space program? Do you know the father of Indian space program? Sir, APJ Abdul Kalam. Okay. Anyone else? APJ Abdul Kalam is the father of Indian space. APJ Abdul Kalam, sir. Okay. Any other? APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam. APJ Okay. Abdul Kalam. You know, the right answer is Vikram Sarabhai. Have you heard this name earlier? Dr. Vikram Ambalal Sarabhai. You know, he is the father of Indian space program who started the space programs, working on different projects across the country, founded ISRO also. You know, APJ Abdul Kalam also worked in the space sector. Also, we called them as a missile man. But this is the right answer. Dr. Vikram Lal Ambalal Sarabhai, right? So he's the main, you know, the person behind the Indian space program. So you should know about this personality. Right? So students, whenever we talk about the space, there's one term which comes in our mind. एक हमेशा एक word आता है हमारे दिमाग में जब भी हम space के बारे में बात करते हैं, that is called as a satellite. तो अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सैटेलाइट होती क्या है? In the simple language, what is a satellite? कौन बताएगा? Anyone? सैटेलाइट होते क्या हैं? ओके, सो देखो सैटेलाइट होते क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट होते हैं इन अ स्पेस दैट ऑर्बिट्स अराउंड अ बिगर ऑब्जेक्ट. एग्जांपल अगर हम लेते हैं नेचुरल सैटेलाइट, दैट इज अ मून. मून हमेशा अर्थ के चक्कर लगाता है ना. सो मून सर्कल्स अराउंड अ बिगर ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड अर्थ. Fine. So this is an example of our natural satellite. But now we also need some satellites for our own purpose, for our own applications. So we send artificial satellites into our space. Right? So हम एक satellites को space में भेजते हैं, so हमारा task कर पाए. You know, satellites क्या क्या काम कर सकते हैं? Can you give me some examples? Student, एक interaction session रहेगा. मैं आपको हर एक slide में कुछ पूछूंगा, so you answer me. Fine. हमें सैटेलाइट की जरूरत क्या है? कौन बताएगा? सर सैटेलाइट हमें सर वेदर इंफॉर्मेशन देती है सर. ओके. एनी अदर एप्लीकेशंस ऑफ अ सैटेलाइट? सर व्हाट? एनी अदर एप्लीकेशन वेदर के अलावा? बाहर के लिए अलग भेज है सर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन. Very good. You know, Satellite helps us to communicate with people. Yeah, for the communication purpose. Fine. For weather information, for photography of Earth, visual parts, or you can see there are infinite application of a satellite communications. Fine. हम सैटेलाइट को डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं. लाइक आजकल आपने देखा होगा कुछ कंट्री स्पाइंग पर्पस के लिए यूज करते हैं. इफ यू हैव सीन द मूवी परमाणु मूवी सबने देखा है? तो हमारा इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम था पोखरण में, तो परमाणु, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब भी हमारे इंडियन साइंटिस्ट काम करने लगते हैं न्यूक्लियर वेपन के ऊपर, न्यूक्लियर टेस्टिंग के ऊपर, तो एक अमेरिकन सैटेलाइट उनके ऊपर आ जाता था उस लोकेशन के ऊपर. सो दैट वी कॉल इट स्पाइंग सैटेलाइट्स. सो एक दूसरे की कंट्री की इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि वो क्या काम कर रहे हैं, तो ऐसे भी सैटेलाइट्स हैं.
So you can see from the from hundreds of kilometer above से भी वो आपकी घड़ी का टाइम देख सकते थे, इतने हाई डेफिनेशन कैमरास थे उन सैटेलाइट्स में. So there are different applications of satellites are there. एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन का, जो आप डेली टू डेली लाइफ में करते हैं. किसी को पता है वो कौन से सैटेलाइट, आप कौन से सैटेलाइट एप्लीकेशन डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं? Google Maps. Very good. Google Maps based with the help of a GPS system, global positioning system. इसके अलावा और Full form of GPS. global positioning system. Another example, DTH. Fine. DTH में होता क्या है, आपके घर के ऊपर एक डिश एंटीना लग जाता है, ठीक है. एंड देन आपने कभी नोटिस किया डिश एंटीना हमेशा स्काई में की तरफ पॉइंट क्यों कर रहा होता है? कभी सोचा? मतलब स्काई में कोई बैठा है? For network. Yeah, because there is a satellite into a sky into a space, so you have to align your dish antenna to that satellite, so that he can that dish antenna can receive the signal. तो एक सिंपल एग्जांपल है आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन का, फाइन, जो आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं. और ऐसे बहुत से एप्लीकेशन हैं जो आप यूज करते हैं डेली लाइफ में. सो यू कैन सी दिस विजुअलाइजेशन पिक्चर. So this is basically satellite revolves around or rotate around a bigger object. Fine. So now the next question comes, like how do they work? Like what are the satellite is doing? So satellite basically collect some information. वो information कुछ भी हो सकती है. It can take the videos, it can take the photographs, it can take the data, it can take the environmental parameters, oceanography से पिक्चर्स, कुछ भी. इट कैन बी ऑफ एनीथिंग. इट डिपेंड्स कि आपका सैटेलाइट क्या काम करने वाला है स्पेस में. फाइन. सो इट कैन गैदर द इंफॉर्मेशन एंड देन इट सेंड बैक द इंफॉर्मेशन टू द ग्राउंड स्टेशन. So this is the basic working of satellite. It collects some information, gathers some data and then send back to the ground station. Fine. और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ अर्थ पे काम करेगा. मे बी द सैटेलाइट इज ऑन अनदर प्लैनेट लाइक मार्स से डाटा कलेक्ट किया एंड इट send the data back to the earth ground station. So this is the simple working of a satellite. Satellite करते क्या है? Sir, can you give some information of Chandrayaan 2? Okay, Chandrayaan 2 का क्या था मिशन? So there are three things. The first is the orbiter, the second is the lander and the third is the rover. जब हम स्पेस में जाते हैं ना, ऐसा आपने देखा होगी लास्ट मिनट में जाकर 5-6 मिनट्स रह गए थे, उसमें जाकर हमारा मिशन जो लैंडर था वो सक्सेसफुली लैंड नहीं हो पाया. बिकॉज अब ऐसा नहीं कह सकते कि इसरो ने ये सब चीजें पहले नहीं प्रिपरेशन किया था. दे प्रिपेयर्ड एवरीथिंग. दे आर वेरी जीनियस ब्रेन्स आर देयर इन इसरो. फाइन. सो होता क्या है, जब हम स्पेस में कोई मिशन करने जाते हैं ना, सो देयर आर सम अननोन फैक्टर्स. जब जो मिशन होता है वो तभी पता लगते हैं कि वो अननोन फैक्टर्स क्या हो सकते हैं. तो वहां पे एट द टाइम ऑफ लैंडिंग वो लैंड नहीं हो पाया. बट ऑर्बिटर इज स्टिल वर्किंग. बट लैंडर अगर लैंड हो जाता प्रॉपरली तो उसमें से एक रोवर निकलता. फाइन. सो यू कैन सी रोवर इज एन एग्जांपल ऑफ रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी. तो अब आप देख सकते हैं कि रोबोट्स अर्थ पर तो है ही, उसके अलावा और प्लैनेट्स पे भी हम रोवर्स को प्लेस कर रहे हैं. अनदर एग्जांपल, आपको पता है कि मार्स के ऊपर कितने रोवर्स हैं अभी तक? Sir, 21. 21. इतने ज्यादा कब भेज दिए हमने? 21 is not the right answer. मार्स पर अभी तक 4 रोवर्स जा चुके हैं एंड द नेक्स्ट वन इज गोइंग एंड उसका नाम जो है वो परसिवियरेंस रोवर है, जो अभी नासा ने 2020 में भेजा है एंड इट इज गोइंग टू लैंड ऑन द सर्फेस ऑफ मार्स इन 2021. फाइन. सो यू कैन सी व्हाई वी आर सेंडिंग अ रोवर्स टू द प्लैनेट. व्हाई वी आर नॉट सेंडिंग द ह्यूमंस फर्स्ट? Any idea? Sir, because it is dangerous for Yes. humans. Yes, because we don't know the. Earth Yeah. has, sir, Mars has no air, no water. Yeah. Sir, because we can gather information about the planet first, so that we can send them. Because we send the machines first ना. अगर हम ह्यूमंस भेजते हैं तो हमें उनको लेकर आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना. सो अभी क्या होता है कि जो हम रोवर्स भेजते हैं, इट इज अ वन वे मिशन. रोवर्स अर्थ से यहाँ से सैटेलाइट जाएंगे, रॉकेट जाएगा, देन सैटेलाइट, देन रोवर प्लेस, देन दिस इज द मिशन. बट अगर इंस्टेड ऑफ रोवर्स वी सेंड एस्ट्रोनॉट, तो हमें उनको वहां सरफेस से वापस भी लेकर आने की जिम्मेदारी है.
So it also at the coast, and also because there are some, you know, climatic condition, environmental condition in Mars is not habitable for the human. So there's a chance of a life, or risk of a life also. So first we send the machines. Machines क्या करते हैं वहां पर जाकर? They collect the data, check the samples, send the information back to the Earth, so that our scientists एनालाइज देखिए वहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, कैसे हम उसमें कुछ करके चेंजेस करके उसको ह्यूमंस के अकॉर्डिंग कुछ बना कर सकते हैं फ्यूचर में. बिकॉज साइंटिस्ट आर लुकिंग द बैकअप प्लेनेट ऑफ अर्थ, बिकॉज हर एक चीज का एक लाइफ होता है, अर्थ का भी एक लाइफ होगा. सो दे नीड सम बैकअप प्लेनेट कि इन केस अगर कुछ ऐसा हो जाए तो वी नीड सम बैकअप प्लेनेट. सो दे आर लुकिंग फॉर अ मार्स, बिकॉज सबसे पहली बात तो ये हमारा पड़ोसी ग्रह है, हमारा नेबरिंग प्लेनेट है. एंड द सेकंड थिंग, उसकी कुछ कुछ कंडीशंस जो आज से अर्थ की मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जैसे थी, वहां पर वो वैसे वैसे उनको अभी तक सोर्सेज से पता लग रहा है कि ये भी कुछ कुछ प्लेनेट हमारे जैसा लग सकता है फ्यूचर में. दैट इज व्हाई दे आर रिलाइंग ऑन द मार्स प्लेनेट. फाइन. सो लेट्स गेट बैक टू द स्लाइड्स. सो नाउ let's come to the history of a satellite. Do you know which one is the first satellite जो space में? Okay, Haryabhatta is the Indian satellite. I'm talking about across the world. सबसे पहला satellite. Chandrayaan first. Sputnik 1. Sir, Sputnik 1. Very good. Sputnik 1. Sputnik 1. You know अभी रशिया ने जो डेवलप किया है ना मेडिसिन, हाँ रशिया ने जो अभी डेवलप किया है मेडिसिन, उसका नाम भी स्पुटनिक रखा है, जो कोरोना के लिए उन्होंने वैक्सीन डेवलप किया है, स्पुटनिक वैक्सीन. You know, so Sputnik 1 was the first satellite launched across, you know, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला जो सैटेलाइट भेजा गया था स्पेस में, दैट इज स्पुटनिक 1. और उसको अक्टूबर 4 1957 में भेजा गया था. एंड यू नो, तभी आपने कभी सुना है वर्ल्ड स्पेस वीक के बारे में? हैव यू हर्ड अबाउट वर्ल्ड स्पेस वीक? किसी को मालूम है, सुना है किसी ने वर्ल्ड स्पेस वीक? ओके, सो अक्टूबर 4 से अक्टूबर 10 तक अक्रॉस द वर्ल्ड हम वर्ल्ड स्पेस वीक बनाते हैं, बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च एनिवर्सरी ऑन अक्टूबर 4. फाइन. एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, sir. आवाज आ रही, बहुत अच्छी आ रही है. ओके ओके, सो इसीलिए हम अक्टूबर 4 से लेके अक्टूबर 10 तक वर्ल्ड स्पेस वीक मनाते हैं. ये डेट आप याद रखिएगा, ये हर साल बनाया जाता है. और पूरे वर्ल्ड में स्पेस इवेंट्स जो होते हैं वो वर्ल्ड स्पेस वीक के अंडर आते हैं, जो इस एक हफ्ते में होते हैं. तो हमेशा जब भी आपको कोई स्पेस प्रोग्राम या स्पेस इवेंट कुछ ऑर्गेनाइज करना हो तो इन डेट्स का हमेशा याद रखिएगा, अक्टूबर 4 टू अक्टूबर 10, दिस इज द वर्ल्ड स्पेस वीक. फाइन. एंड डू यू नो, एक डॉग भी भेजा था स्पुटनिक 2 में. एक लाइका एक बिच थी, मॉस्को स्ट्रीट से उन्होंने उसको पकड़ा, उसको सैटेलाइट में बिठाया और उसको स्पेस में भेज दिया. फाइन. बट एट द री एंट्री टाइम और ऑक्सीजन सप्लाईज रन आउट हो गया था, तो वो स्पेस में ही डाई हो गए डॉग. सो लाइका इज अ स्ट्रे डॉग जो सोवियत यूनियन ने स्पुटनिक 2 में स्पेस में भेजा था. देन यू नो, आपको मालूम है कि यूएसए एंड यूएसएसआर और जो अब रशिया है उसके बीच में कितना ईगो है? You know about that Russia and Americans are also having some ego problem with each other. So the Russians are working on space and the Americans is also working on the space sector. So they want to be the first one कि हम सबसे पहले सैटेलाइट भेजेंगे, हम सबसे पहले सैटेलाइट भेजेंगे. बट ये जो रेस है वो कौन जीत गया? यूएसएसआर, रशिया. So now you can see this. You can see this is the headline in New York Times. कि Soviet fires Earth satellite into space and it is circling the globe at 18,000 मील per hour and sphere tracked in 4 crossing over United States. You can see they have mentioned the word US. Now the US were thinking ना Americans कि हमारे ऊपर से कोई सोवियत का कोई सैटेलाइट जा रहा है, पता नहीं वो क्या काम कर रहा होगा. फाइन. एंड यू नो, जो फर्स्ट सैटेलाइट था हमारा स्पुटनिक 1, वो क्या कितना बड़ा था? यू नो, वॉलीबॉल शेप जितना था, उसमें 4 एंटीनास थे और उसको वो क्या भेज रहा था स्पेस से? किसी को मालूम है वो स्पेस से अर्थ पर क्या चीज सेंड कर रहा था? एनीवन? They're only sending the message beep 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 beep. Sir, please repeat the question. यू नो, जो फर्स्ट सैटेलाइट था स्पुटनिक 1 जो यूएसएसआर ने लॉन्च किया था, वो स्पेस में तो लॉन्च कर दिया, बट वो क्या काम कर रहा था स्पेस में? सबसे पहली बात तो वो एक वॉलीबॉल
शेप जितना सैटेलाइट था। थोड़ी सी वॉइस सर क्रैक हो गई है सर। ओके ओके ओके। बेटा जिसको वॉइस ब्रेक आ रही है ना, आवाज सर की क्लियर है, आप मीटिंग से लेफ्ट होके वापस हाँ, आ जाओ। मे सर बी की आवाज योर बिल्कुल क्लियर है। इंटरनेट कनेक्शन इज वीक। या बेटा सर की आवाज क्लियर है, आपको तकलीफ हो रही है तो आप मीटिंग को लेफ्ट करने का और वापस आने का, आपका आवाज ठीक हो जाएगा। So it is like a volleyball kind of a shape having 4 beam antennas and it is sending the message beep 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 beep. Fine. So this because आप फर्स्ट सैटेलाइट यूज कर लॉन्च कर रहे हैं, तो डोंट एक्सपेक्ट कि वो एक वीडियो भेजेगा या हाई डेफिनेशन कैमरा की हेल्प से कुछ भेजेगा। सो इट वाज द फर्स्ट सैटेलाइट। तो एक बेसिक ऑपरेशन था कि, और उनको फर्स्ट भी आना था कि हम पहले इस कंट्री बन जाएंगे अगर हमने पहला सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। सो दिस वाज द टाइम where the space race started between USSR and America, USA. Then let's go to the history also. Do you know who is the first person traveled to the space? The name of the person who traveled? Neil Armstrong. Neil Armstrong. Neil Armstrong. Okay. Rakesh Sharma. Another answer? Yuri Gagarin. Very good. You know, Neil Armstrong is the first person to land it on the moon. Fine. Then Sir, can I tell? Sir, Yuri Gagarin. yes. Sir, Yuri. Yeah. So Yuri Gagarin was the first person who. So Yuri Gagarin was the first person to travel into the space and first person to orbit the planet Earth. Fine. Neil Armstrong was the person who landed on the moon, who placed the first foot on the moon. Then Rakesh Sharma was an Indian. So वो इंडिया का हमारा थे. Then, you know, if I talk about the world, so Yuri Gagarin was the first person who traveled into the space. Fine. Now the next question. अब हम बाकी वर्ल्ड की तो बात कर चुके हैं. Now let's talk about the India, right? So who is the first person to travel into a space from India? Rakesh Sharma. Rakesh Sharma. Very good. Rakesh Sharma. Right? Yeah, Rakesh Sharma. Yeah, First Indian woman sir Kalpana Chawla. ओके, मैं उसके ऊपर भी आता हूँ. ठीक है. तो इफ आई टॉक अबाउट द पर्सन फ्रॉम इंडिया हु ट्रैवल इनटू द स्पेस, राकेश शर्मा. फाइन. अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे. हाउ मेनी इंडियन सिटीजन हैव बीन ट्रैवल इनटू द स्पेस? कितने इंडियन स्पेस में गए हैं अभी तक? Sir, only one. ओनली वन. अच्छा, और कोई आंसर? सामने जितना चौड़ाई है। और कोई बताना चाहेगा? Only two. टू सेकंड कौन है? सर 7 और देखो, if I talk about the Indian citizen, if I talk about the Indian citizen, that is only Rakesh Sharma. कल्पना चावला joined NASA. ठीक है. सो नासा में ज्वाइन करने से पहले एक्चुअली वो इंडियन सिटीजन की अगर मैं बात करता हूँ, सिर्फ राकेश शर्मा ही है ना. वो कल्पना चावला इंडियन सिटीजन में नहीं आते थे, क्योंकि वो आई थिंक वो नासा में ज्वाइन कर चुके थे, और नासा के लिए आपको अमेरिकन सिटीजन होना पड़ता है पहले. एंड देन द सेकंड वन, जो हम आजकल बोलते हैं कि सुनीता विलियम्स, ही इज आल्सो एन अमेरिकन. सो इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट इंडियन सिविलियन इनटू द स्पेस, वो थे राकेश शर्मा, एंड ही वाज अ विंग कमांडर इन इंडियन एयर फोर्स. बिकॉज हमेशा एस्ट्रोनॉट्स ना एयर फोर्स से क्यों ले जाते हैं? बिकॉज एट दैट टाइम, बिकॉज दे हैव टू कंट्रोल द यू नो द मिशंस. लाइक जैसे हम अपने प्लेन्स में देखते हैं कि यू हैव टू लैंड, यू हैव टू गो, यू हैव टू वर्क ऑन डिफरेंट. सो दे ऑलवेज फाइंड द इंडियन एयर फोर्स, बिकॉज जब आप रॉकेट में बैठकर स्पेस में जाते हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर काफी ग्रेविटेशनल फोर्स लगते हैं. सो इंडियन जो एयर फोर्स होते हैं उनके ऑलरेडी जब वो फाइटर जेट्स उड़ाते हैं, फाइटर प्लेन्स, तो उनके ऊपर, उनकी बॉडी के ऊपर काफी ग्रेविटेशनल, उनको इस चीज का ऑलरेडी एक्सपीरियंस हुआ होता है. सो ये ऑलवेज, बिकॉज अभी आपने सुना होगा कि मोदी जी ने लास्ट टाइम 15 अगस्त को बोला था ना कि हम एक मिशन करने वाले हैं इंडिया का, स्पेस मिशन, जिसका नाम क्या होगा सर? गगनयान. गगनयान, जिसमें हम इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे स्पेस में. तो उसके लिए भी उन्होंने इंडियन एयरफोर्स से कुछ एक पायलट्स की ट्रेनिंग चल रही है. फाइन. सर अभी आपने बताया था कि सर जो कल्पना चावला थी सर वो तो इंडियन थी ना सर, बट आपने अभी बताया कि सर वो अमेरिकन के सर नासा. एक्चुअली क्या था, इंडियन अगर मैं बात करता हूँ इंडियन सिविलियन की, वो सिर्फ राकेश शर्मा ही थे. ठीक है. कल्पना चावला becomes, because Kalpana Chawla born in India but brought up and he studied in US and then married in US, then he joined she joined NASA. Right? So if I talk about
सर वो अमेरिका के तरफ से सर कितनी बार सर स्पेस में गए थे सर? आई थिंक वो कल्पना चावला फर्स्ट टाइम ही था उनका, एंड देन हुआ क्या था, कहीं थी कोलंबिया, सर, तो उनका हाँ, शायद एक्सीडेंट हुआ था सर। या उसमें उस मिशन का नाम था कोलंबिया स्पेस मिशन। तो उसमें हुआ क्या था, जब यहाँ से अर्थ से जब वो टेक ऑफ कर रहे थे, जब उनका फायर हो रहा था रॉकेट, तो जाते वक्त जैसे ही वो लॉन्च हो रहा था, उसकी कुछ एक प्लेट्स में क्रैक आ गया था, और कुछ एक फोम का पीस टूट कर ना, उनकी जो प्लेन जो होता है ना, जो प्लेन से जिसको लैंड करते हैं वो स्पेस शटल, उसके ऊपर टच होके तो उसमें क्रैक आ गया था। और ये नासा को कुछ पता चला था, जब उन्होंने वीडियोस को एनालाइज किया लॉन्चिंग के, तो उनको पता लगा कि ये कुछ ब्रेकेज आया है हमारे पार्ट्स में। तो उनका पूरा मीटिंग हुआ, वो स्पेस में तो पहुंच चुके थे, बट उनका सब मीटिंग हुआ कि कैन वी सेंड अनदर स्पेस शटल सो दैट वी कैन सेव द लाइफ ऑफ 5 or 6 एस्ट्रोनॉट विच इज देयर इन कोलंबिया स्पेस शटल। बट उन्होंने सोचा कि नहीं, वाई वो स्पेस जो शटल है वो वापस आ जाएगा सेफली, जरूरत नहीं है दूसरा मिशन करने की। बट एट द टाइम ऑफ री एंट्री, तो टेम्परेचर इज thousands of degrees, बिकॉज हमारी अर्थ का शील्ड है, उस शील्ड में जब वापस अंदर आते हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शन हीट इंक्रीजेस, जिससे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। और उससे हुआ क्या, उस क्रैक्स में से फायर हुआ, एंड द होल स्पेस शटल बर्स्टेड। So ये वो at the time of re-entry, the Columbus space shuttle exploded and all the astronauts are died. तो सर जब भी सर कोई भी सर रॉकेट जो स्पेस में जाता है सर, एक सर एक्स्ट्रा सर मैं ज्यादातर सर मूवीज में देखता हूँ सर, एक्स्ट्रा एक बॉक्स टाइप का उसमें रहता है सर, वो भी सर हाँ बोलिए आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलिए। तो सर उसमें एक सर वो स्मॉल रहता है, तो उसमें एस्ट्रोनॉट जो भी नासा के सर, वो उसमें क्यों नहीं बैठे सर? नहीं, बॉक्स नहीं रहता। होता क्या है, जब मैन मिशन करते हैं तो एक कैप्सूल, आजकल तो कैप्सूल भेज रहे हैं, जैसे नासा भी है, वो कैप्सूल भेजते हैं सैटेलाइट के साथ, रॉकेट्स के साथ, वो डिटैच हो जाता है ऊपर सैटेलाइट में, देन वापस वो कैप्सूल विद द हेल्प ऑफ कैप्सूल वो री एंट्री करता है, देन एट द टाइम ऑफ लैंडिंग वो ओशन में उनके पैराशूट्स ओपन हो जाते हैं और दे लैंडेड फाइन। बट एक ऐसा, हाँ, वो उस टाइम कैप्सूल नहीं है, आज के लिए कैप्सूल भेजने लगे हैं। पहले क्या था, दे यूज स्पेस शटल्स, तो इट इज लाइक अ प्लेन, फाइन। वो प्लेन्स को उनको लैंड करना था, बट एट द टाइम ऑफ री एंट्री ना, वो जहां से क्रैक हुआ था वहीं से हीट जनरेट हुआ, एंड द टेम्परेचर इंक्रीजेज इन साइड ऑफ द चैम्बर, वो एक्सप्लोड हो गया था। So that was a failure of Columbia Space Shuttle mission. Now, which is the first Indian satellite into space? The student, the name of the Indian satellite into the space? Aryabhatta, and it was launched on 19th April 1975. And Aryabhatta was the mathematician who is given the zero. Fine. So it was the first satellite of Indian into the space. Now, students, how many satellites are there? There are more than 5,000 satellites are into the space. और ऐसा नहीं है कि हर एक कंट्री खुद जितने मर्जी सैटेलाइट बनाकर स्पेस में भेज दे। उसके लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको हम UNUSA बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स। सो वो हर एक कंट्री को स्पेस अलॉट करता है, टाइम अलोकेट करता है कि आप इस स्पेस में जाकर आप इसको मतलब जो भी अगर कंट्री ने अगर लॉन्च करने हैं सैटेलाइट्स, सो दे हैव टू फर्स्ट रजिस्टर देयर एप्लीकेशन इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, देन दे अलाउ देम, बिकॉज ऐसे तो कोई भी कंट्री स्पेस में वेपन्स भी प्लांट कर सकता है। सो दिस आर नॉट allowed. So each and every information has to be shared with this organization called UNUSA. So har ek year by year the satellite number is increasing, but there is a lifespan of satellite. After that lifespan of a satellite, they become as a dead satellite, और उसको हम बोलते हैं debris. So you can see these are the number of satellites जो अभी ये 1-2 साल पुराना डाटा है. The USA is having the maximum around 850 something, and India is in the 5th number, but अभी ये बढ़कर ज्यादा हो गया होगा. And India is having around 55 satellites, working satellites. And there are many satellites which are not working, but still they are orbiting, because you can launch the satellite, but you cannot, there's another method. They can also send the satellite into the graveyard orbit. एक graveyard orbit होता है जहाँ पे dead satellite को भेज दिया जाता है. But some satellite क्या जब वो उनका लाइफ खत्म हो जाता है, वो वापस अर्थ के री एंट्री में आते हैं और वो वहाँ पे
एक्सप्लोड हो जाते हैं और वो डेड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं. दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग, क्योंकि जो डेब्रिज होती हैं दे आर वेरी हार्मफुल. जो हमारे सैटेलाइट है उसको टक्कर लगा सकती है, उसके साथ वो कोलाइड कर सकती है. देन कभी कभी एस्ट्रोनॉट स्पेस वॉक करते हैं, उनके आसपास से सैटेलाइट डेब्रिज आ सकती है. सो दे आर वेरी हार्मफुल फॉर द स्पेस मिशंस. Excuse me, sir. Yes. Sir, what is the average lifespan of satellite? It depends on the power, because the more satellites, the more satellites are rely the solar panels. Because अगर हम सैटेलाइट स्पेस में भेज रहे हैं ना, तो एक एक ग्राम्स का वैल्यू होता है. तो अगर हम चाहते हैं कि बहुत ज्यादा हमारा सैटेलाइट का लाइफ ज्यादा हो जाए, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन पुट नंबर ऑफ बैटरीज. बट हर एक बैटरी के साथ वेट ऐड होगा. वेट ऐड होने से क्या होगा, आपको रॉकेट हैवी यूज करना होगा, और इतने हैवी रॉकेट्स इजीली अवेलेबल नहीं होते. तो क्या करते हैं, सैटेलाइट को जितना हल्का हो सके वो हल्का बनाते हैं. उसके लिए क्या होगा, सैटेलाइट में 95% बैटरी सोलर से मिलती है, सोलर पैनल से, एंड 5% और 10% वी रिलाई ऑन द बैटरीज. जो क्या होता है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में उसका पिक्चर दिखाऊंगा कि वो बैटरीज की यूज की जाती हैं. वाई वी आर नॉट ऑपरेटिंग 100% ऑफ सोलर पैनल. वो तो फ्री एनर्जी है. ऑल ओवर द across our solar system, sun is available, and sun is not going to charge the money like I am giving the sunlight, pay me. So so we are getting the power from the solar energy, we using solar panels. Friends, you can see how the satellite is going in. सर जैसे कहते हैं सर जुपिटर हैज, सर जुपिटर की सबसे, सर जो जुपिटर प्लैनेट है उस पर सबसे बड़ी सबसे लार्ज सैटेलाइट है सर. नहीं, लार्ज सैटेलाइट नहीं. आई थिंक जो आप कह रहे होंगे ना, वो द मून्स, नंबर ऑफ मून्स ऑन जुपिटर एंड सैटर्न इज वेरी मच अराउंड 50. यस नो सर, मून सर मून सर 55 है सर वहाँ पे. सर मैं सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ सर, नेचुरल सैटेलाइट सर. नेचुरल, हाँ, नेचुरल सैटेलाइट मींस मून्स हो गया ना, बिकॉज द जुपिटर इज इन अ वेरी बिग साइज. सो उससे क्या है, उसका ग्रेविटेशनल पुल भी बहुत जाता है. तो वो क्या करता है, आसपास के जितने भी ऑब्जेक्ट घूम रहे होते हैं उसके ऑर्बिट में आने शुरू हो जाते हैं. इस वजह से उसके मून्स ईयर बाय ईयर बढ़ते जाते हैं. और कभी कभी क्या होता है, वो इतना पुल होता है कि वो मून उसके प्लैनेट में ही आगे कोलाइड हो जाते हैं. फाइन. सो सबसे बिगेस्ट मून जो हमारे सोलर सिस्टम का है, वो पता है क्या नाम है उसका, जो बिगेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम? सर जुपिटर पे ये था, Titan. गैनीमेड. गैनीमेड इज द बिगेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम. सर जो हमारा मून है सर उसका क्या नेम है? हमारा मून का नेम मून ही है. ओके सर. You can see this video how the satellite is going into the space. The rocket is there. Fine. So first thing, this is the launch pad. ये एक animated video है. First it will generates the thrust and it is going into the space. Then after reaching some points, there are some stages into the rocket. अब ये देखो, ये फर्स्ट स्टेज होगा, इसमें से कुछ एक पार्ट्स रिमूव हो जाएंगे and it come back to the oceans. Now it can come back again to the oceans, and then the next stage will be there. Now on the front side आपको देखा होगा conical thing है, that is a heat shield. Sir, video is not visible actually. Video is not visible. Okay. I think. Ma'am, I think please disconnect yourself and connect it once again. Maybe your network is poor, that's why. Because I can see the video here, I am able to see the video. Okay, fine sir, fine. You can see in the top side the conical part is there. इसको हम बोलते हैं heat shield, because जब सबसे फर्स्ट पॉइंट स्पेस में जब जाते हुए होता है, यूज टच होता है, दैट इज दैट हीट शील्ड, जो कोनिकल या ओ गिव शेप में होता है. और होता क्या, जैसे हम स्पेस में जाते हैं, एयर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स होते हैं, तो उससे क्या होगा, फ्रिक्शन से क्या जनरेट होता है, हीट. जैसे मैं अगर अपने हाथों को भी ऐसे कर रहा हूँ, फ्रिक्शन से क्या होगा, हीट. तो इसीलिए सबसे पहले जब ये हीट शील्ड होती है, इसको हम ऐसा बनाते हैं कि ये उतने टेम्परेचर को इजीली अब्जॉर्ब कर ले, उसमें आग वाग ना लग जाए, फायर ना हो जाए. तो सबसे पहले स्पेस में जाने के बाद जब वो ये सारा पार्ट एलिमिनेट हो जाता है, हीट शील्ड को हटा देते हैं. देन आफ्टर दैट यू कैन सी द सैटेलाइट इज देयर, जो हमारा पेलोड होगा एक रॉकेट का. आफ्टर रीचिंग अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, Ravi sir, how much time we have? Actually, there are many things to discuss. So yes, Raghav ji, you can proceed. You are doing great. Okay. Then can wait because they are on Sunday, no? Ma'am, is it okay, right? Please. Fine, sir. Actually, it was for 1 hour, but
it is now 20 minutes exceeded. So we can have How it much for time? 10-15 minutes. Okay, fine. 10-15. Okay, ma'am. Okay. Okay, so I'll But cover the actually, important points. Raghavji, salute you. You are doing great. Awesome. Okay, thank you, sir. I'm So you loving can your see, Yes, slides. sir, definitely. I second you, sir. We are really very happy to have you with us, and the students are taking so much interest. okay, thank you. So you I can don't end the class. yes, so you can see at reaching the particular orbit, अब काम खत्म हो चुका है हमारे रॉकेट्स का, उसको प्लेस करने के बाद नाउ सैटेलाइट, अब नाउ यू कैन सी स्टूडेंट, अभी जो पार्ट रह गया है ये बन जाता है डेब्री. डेब्री मींस अ यूजलेस पीस ऑफ अ जंक मटेरियल. अब ये भी स्पेस में घूमता रहेगा, ठीक है. और दिस इज हर एक मिशन के साथ हम डेब्री को स्पेस में बढ़ा रहे हैं. फाइन. तो इसलिए काफी रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए जाते हैं कि हाउ टू मिटिगेट द डेब्री, डेब्री को रिमूव कैसे करें, बिकॉज जैसे जैसे स्पेस मिशन बढ़ेंगे, जैसे जैसे सैटेलाइट्स बढ़ेंगे, ये डेब्री इज वेरी हार्मफुल इवन फॉर द लाइफ ऑफ एस्ट्रोनॉट. सो you can also research on this thing, like how to remove the debris from the space. So you can see now this is our satellite. सबसे पहले ये पैनल ओपन हुए, this is the solar panel, and then ये antennas, because they have to send the information back to the earth. There are some transponders, some cameras are there. So each and every flap is opening up. Then it starts rotating, revolving around the planet Earth. And it is getting the power from the sun. So in this way, we are going to increase the satellites day by day for our own uses. Now, whenever we are going to use a space mission, there are two things: space segment, space में क्या क्या चीजें रहने वाली हैं, and ground segment, ground में क्या क्या चीजें होंगी. तो space segment की बात करते हैं, satellite. Now, the next question which comes in your mind, space में like what is the means for launching satellite? Satellite को कैसे launch किया जाए? मैंने satellite बनाया, can I throw? मैं अपने टेरेस पे खड़े होकर उसको जोर से स्पेस स्काई में फेंकूं, चला जाएगा स्पेस में? Is it possible? No, sir. So No, sir. what should we do now? अब सैटेलाइट तो बना लिया है, बट स्पेस में कैसे पहुंचाए? आंसर, you have a satellite, आप सैटेलाइट डेवलप कर चुके हैं. Now you have to place the satellite into the space orbit. क्या किया जाए? Can we hire? by the help of हमें launching area चाहिए सर पहले. Rocket is a launching vehicle. Fine. रॉकेट के ऊपर सैटेलाइट को प्लेस भी तो चाहिए सर. प्लेस तो चाहिए. अगर रॉकेट होगा तो अंडरस्टूड है, प्लेस भी होगा, एक लॉन्चिंग पैड होगा. ऐसा नहीं है कि रॉकेट हम बनाने वाले हैं, बिकॉज इफ यू डेवलप अ सैटेलाइट ना, यू कैन नॉट लॉन्च द सैटेलाइट इनटू द स्पेस. इतना मैकेनिज्म आप नहीं कर पाएंगे रॉकेट बनाने तक का. सो वी हैव टू अप्रोच द स्पेस एजेंसीज लाइक इसरो, नासा, दैट वी हैव डेवलप्ड दिस सैटेलाइट. एंड जो इसरो है, अगर यू आर मेकिंग अ स्टूडेंट सैटेलाइट, सो दे विल नॉट चार्ज यू एनीथिंग. लाइक अगर मुझे लॉन्च करना है, अगर मैं कंपनी से हूं, अगर मुझे लॉन्च करना है, सो दे विल चार्ज अराउंड 5-10 lakh rupees per gram. Fine. So but per kg. But if you are a student, you can launch your satellite, you can go to the ISRO, and if they find कि आपका satellite बिल्कुल ठीक है, then they will launch it without any cost. So this is a good opportunities for you. Then electrical power system is there. Power is there because हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स को चलने के लिए पावर चाहिए. देन उसके बाद मैकेनिकल स्ट्रक्चर, हर एक सैटेलाइट का कुछ मैकेनिकल स्ट्रक्चर होगा. कम्युनिकेशन एंटीना टू सेंड एंड रिसीव द इंफॉर्मेशन. नाउ सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर फंक्शन, आपने एक चीज देखी होगी जब भी हम सैटेलाइट. यस Sir, sorry to interrupt you, यस मैम. but I want to ask that from which thing the satellite has been connected to the orbit टू द orbit of the Earth. ओके, सो देयर इज सम कंपोनेंट्स आर देयर जिसको हम बोलते हैं एटीट्यूड एंड ऑर्बिट कंट्रोल सिस्टम. बिकॉज जब उसके अंदर ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स होते हैं, सो उन कंप्यूटर्स के अंदर उसका जो ऑर्बिट है वो सब इंस्ट्रक्शंस फीड की जाते हैं, और अर्थ पे जो नेटवर्क कंट्रोल सेंटर होता है वहां पे बैठ के सब साइंटिस्ट, उसका सब एस्ट्रोनॉट, सब साइंटिस्ट बैठकर उसका ऑर्बिट ट्रैक कर रहे होते हैं. तो दे विल फीड द इंफॉर्मेशन इन द ऑनबोर्ड कंप्यूटर कि आपको इस ऑर्बिट में रहना है. और उसमें एक कंपोनेंट होता है जिसको हम एओसी बोलते हैं, एटीट्यूड एंड ऑर्बिट कंट्रोल सिस्टम, जिससे वो ऑर्बिट में अगर वो मूव कर रहा है तो कुछ उसमें प्रोपल्शन होगा, सो दैट वो हमेशा ही एक इलेप्टिकल या सर्कुलर ऑर्बिट में रहेगा.
सो एक कंपोनेंट है जिसका नाम है AOC, वो नेक्स्ट स्लाइड में होगा, आपको मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। Okay. ओके सो And sir, what happens if it is unable to connect with the orbit? ओके अगर नहीं होगा तो वो जाता जाएगा, या तो वो एस्केप वेलोसिटी में चला जाएगा, ऑर्बिट से जाता रहेगा बाहर बाहर बाहर, देन कुछ नहीं हो सकता उसका। Okay. सो दे आर गोइंग लाइक, बिकॉज़ स्पेस में अर्थ अर्थ पे क्या होता है, अगर आप एक बॉल फेंक रहे हैं ना तो बॉल कुछ टाइम के बाद नीचे हो जाएगा, बट स्पेस में क्या है, अगर आपने 10 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से कुछ फेंका है ना, वो जाता रहेगा 10 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, वो कभी नहीं रुकने वाला, बिकॉज स्पेस में एयर तो है नहीं। जब तक वो किसी डेब्री या कोई प्लेनेट या किसी के पुल में ना आ जाए तब तक वो चलता ही रहेगा, वो कभी वापस नहीं आने वाला। Okay. ओके तो जब भी आपने सैटेलाइट स्पेस मिशन देखा होगा तो आपने ये पिक्चर हमेशा देखा होगा, काफी पर्सन नीचे बैठ के कुछ देख रहे होते हैं, इसको हम बोलते हैं नेटवर्क कंट्रोल सेंटर। ये ट्रैक करता है, रिसीव करता है डाटा। एंड एक क्वेश्चन आता है इसमें, एक्लिप्स। एक्लिप्स क्या होगा अब सैटेलाइट के केस में? आपने सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स पढ़ा होगा ना, बट सैटेलाइट के केस में एक्लिप्स क्या होगा? देखो वेरी गुड, बिकॉज सैटेलाइट के कुछ पैनल्स होते हैं जो सन के डायरेक्शन में रहते हैं, जब वो सन से पावर लेते हैं तो चलते रहते हैं, बट एक ऐसा टाइम आएगा जब वो किसी भी प्लेनेट, चाहे अर्थ हो चाहे मार्स हो, उस प्लेनेट के पीछे चला जाएगा, तो उस टाइम में उसकी जो सेकेंडरी बैटरीज होती है ना, जो चार्ज हो जाती है सोलर पैनल से, देन वो यूज करेगा। इसको हम बोलते हैं एक्लिप्स मैनेजमेंट। फाइन सर सैटेलाइट में अगर सर फ्यूल सर कम पड़ जाए तो सर? नहीं, ऐसा कैसे कम पड़ेगा, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, जीनियस माइंड बैठे हैं, उनको देखो हर एक सैटेलाइट का यहीं से टाइम फिक्स होता है, ये हमने 8 साल के लिए चलाना, ये हमें 5 ईयर्स के तक वर्किंग करना, ये 10 ईयर्स तक वर्किंग करना, तो उस एस्टिमेट से सब फ्यूल्स एंड सब कैलकुलेशन करके भेजा जाता है। सर पूरा फिक्स करके भेज देते सर? हाँ, यहीं से सब कुछ सेट होके जाता है, बिकॉज स्पेस में जाके हम उसको कुछ फिक्स नहीं कर सकते ना, पेट्रोल नहीं भरवा सकते उसमें, या कोई भी फ्यूल नहीं उसका इंक्रीज कर सकते, या चार्ज नहीं कर सकते बैटरी। जैसे हम सर हमारी बाइक स्मूथ चले सर, तो इसके लिए हम लोग सर बहुत तरह के सर वो फ्यूल्स डालते हैं सर इंजन में सर, तो रॉकेट में भी ऐसा कुछ डलता ही है? क्रायोजेनिक फ्यूल भी चल रहे हैं आजकल रॉकेट्स में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स आर देयर, बट आजकल जो मोस्टली यूज करते हैं क्रायोजेनिक फ्यूल्स। एक्सक्यूज मी सर। यस स्टूडेंट, लेट मी एक काम करें, एक बार मैं जल्दी से एक बार ओवरव्यू दे दूं आपको, बिकॉज वी हैव टू वाइंड अप द सेशन, बिकॉज कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसके बाद सर को बोलने दो, और फिर आप लोग का जो क्वेरीज होगा ना फिर वो आपको बताएंगे। हाँ, फिर आपका लास्ट में सारी क्वेरीज होगा ना, वन बाय वन सब ले लेंगे, एक बार मैं बीच जल्दी में इंपॉर्टेंट इंटरप्ट मत करो सर को, क्या है ना कि एक फ्लो खत्म हो जाता है ना जब आप लोग बीच में इंटरप्ट करोगे। ठीक है, तो ग्राउंड सेगमेंट में अर्थ स्टेशन, जहाँ पे हमारे अर्थ के स्टेशन होंगे, जहाँ पे बड़े बड़े डिश एंटीनास लगे होंगे, नेटवर्क कंट्रोल सेंटर जो कुछ साइंटिस्ट कंप्यूटर्स में ऑपरेट कर रहे होंगे, ट्रांसमिट इक्विपमेंट जो ट्रांसमिट करेगा डाटा, रिसीव इक्विपमेंट जो रिसीव करेगा, एंटीना सिस्टम, तो पूरा एक स्ट्रक्चर रहता है, ये ग्राउंड सेगमेंट में इंक्लूड होता है। देन अब आता है कि आपने किस ऑर्बिट में भेजना है। अब हर एक सैटेलाइट का अलग ऑर्बिट होता है, जो अर्थ के सबसे नियर है वो होगा लो अर्थ ऑर्बिट, देन उसके बाद MEO मीडियम अर्थ ऑर्बिट, देन GEO सबसे दूर होता है GEO स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। आपको पता है कि ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक सैटेलाइट है जिसके अंदर हमेशा 4-5 एस्ट्रोनॉट रहते हैं, वो अर्थ के LEO में है, अराउंड 400 किलोमीटर उसका है। आपको वो रात को भी दिखाई देगा, अगर आप रात को, उसका एक ऐप आता है ISS ऑन लाइव, यू कैन फाइंड इट ऑन प्ले स्टोर, ISS ऑन लाइव। उसमें क्या होता है कि वो अर्थ के चक्कर लगाता रहता है, एक दिन में 20-25 चक्कर लगा लेता है, और रात के टाइम अगर होगा तो अगर आप वो ट्रैक करेंगे तो वो आपकी लोकेशन में बता देगा कि 7:05 के ऊपर आपके ऊपर से ISS जाएगा, तो आपको एक ऊपर तारा घूमता दिखाई देगा। और आपको पता है कि रात को आपको कुछ ऊपर स्टार मूव करता दिखाई देता है, वो सैटेलाइट होते हैं, और वो चमकते क्यों है, किसी को पता है? डू यू नो, आपको चमकती हुई चीज मूव क्यों दिखती है? क्योंकि सर वो फोटो क्लिक कर नहीं, उसमें सोलर पैनल लगे होते हैं, जब सोलर पैनल के ऊपर सनलाइट, सन नहीं, उसमें हाँ कुछ मेटल पार्ट भी होंगे, कुछ सोलर पैनल्स होंगे, जब सोलर पैनल्स के ऊपर सनलाइट पड़ती है तो वो हमारे एक पॉइंट ऑफ व्यू से विजिबल होना शुरू हो जाता है वो सैटेलाइट। तो मेन रीजन ये होता है। तो स्टूडेंट, सैटेलाइट लॉन्च्ड इनटू एन ऑर्बिट विद द हेल्प ऑफ अ रॉकेट। देन आपने एक टर्म हमेशा सुना होगा कि एक नियरेस्ट पॉइंट होता है एंड बिकॉज हर एक ऑर्बिट का एक इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा, एक नियरेस्ट पॉइंट होता है, एक फारदेस्ट पॉइंट होता है। तो नियरेस्ट पॉइंट को हम पेरिगी बोलते हैं एंड फारदेस्ट पॉइंट को अपोगी। कभी कभी आपने सुना होगा, बोलते हैं ना कि मून अर्थ के बहुत नजदीक आ गया है, तो वो पेरिगी पॉइंट है। वो कहते हैं ना मून इज अपियर टू बी बिगेस्ट मून, और ये 15-20 साल बाद या 100 साल के बाद आने वाला है, दैट इज द पेरिगी पॉइंट।
So can satellite, अब हम रियल सैटेलाइट बनाए तो फॉर द बजट ऑफ अ रियल सैटेलाइट crores of rupees, तो हम उसका एक प्रोटोटाइप बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं कैन सैटेलाइट। एक कैन की फॉर्म में, जैसे हम कोका कोला का कैन पीते हैं, वैसे कैन की शेप में हम एक सैटेलाइट बनाते हैं जिसमें सब कुछ अपने कंपोनेंट्स फिट कर देते हैं और उसको हम पैराशूट की हेल्प से कुछ एक हाइट पे जाके छोड़ देते हैं। तो ये होता है कैन सैटेलाइट। तो यू कैन सी दिस वीडियो। कैन सैटेलाइट को एक ड्रोन के साथ बांधा और उसको काफी ऊपर जाके, हाइट के ऊपर जाके छोड़ दिया, और उसमें एक पैराशूट होता है। और इसके बाद हम ग्राउंड स्टेशन, हमारे लैपटॉप के साथ एक ग्राउंड स्टेशन कनेक्ट होता है जो हमारे पास सारे एनवायरनमेंट की डाटा भेजता है कि ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, ऑल्टीट्यूड कितना है। So this is all the systems in this. Now rocket and launching vehicle, it gets spacecrafted to the space. And जो आपको अभी सौरभ सर ने भी बताया था, हाई ऑल्टीट्यूड बैलून सैटेलाइट। हाई ऑल्टीट्यूड बैलून सैटेलाइट क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ अ बैलून, हीलियम बैलून। ये जो बैलून था ये अराउंड 6 to 8 फीट का था। इसमें हमने, ये हमारा एक मिशन किया था हमने एक स्कूल स्टूडेंट्स के साथ में। उन्होंने 6 से 8 महीने लग के एक सैटेलाइट बनाया था, उसको स्पेस में लॉन्च किया था। वो अराउंड 1,50,000 फीट के ऊपर गया था, और वहां पे जाके इसने पूरा वीडियोग्राफी था ये मिशन का, और कुछ उसमें पैरामीटर्स थे, तो ये आप देख सकते हैं। तो इसने रात को हमने ये 2 बजे लॉन्च किया था फ्रॉम बटिंडा, एंड इट इज लैंडेड इन कुरुक्षेत्र इन द मॉर्निंग 7 o'clock। फाइन, बिकॉज आप जब भी आप कुछ चीज भेज रहे हैं ना स्काई में, स्पेस में, तो आपको बहुत सी परमिशन लेनी पड़ती है। तो हमने सब परमिशन लेके इसको लॉन्च किया था। इवन एयरफोर्स, ATC, डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सबसे हमने परमिशन लेके इसको लॉन्च किया गया था। तो यू कैन सी, ये हमने जो कैमरा लगाया था ना, इस कैमरे से फोटोग्राफ्स आई थी, बिकॉज ये मॉर्निंग टाइम था अराउंड 3, 4, 5 o'clock का। तो अर्थ राइज, सन राइज कर रहा था, तो हमें अर्थ का कर्वेचर मिला था, और ये 1,50,000 फीट तक गया था। जो हमारे नॉर्मल प्लेन्स होते हैं वो 30,000 फीट या 35,000 फीट तक जाते हैं। तो ये मोर देन 5 टाइम्स उसके ऊपर गया था। वहां पे जाके बैलून फट गया। देन उसमें एक पैराशूट था, पैराशूट से वापस नीचे आया। और ये पूरी पिक्चर्स है, मैंने फर्स्ट और कुछ अच्छे पिक्चर्स लगाए। ये हमारे पास 5-6 घंटे का पूरा वीडियोग्राफी था। So you can see the pictures launching to landing. Now student, if you have any question you can ask now. Yes, बच्चों आप पूछ सकते हो। और students yes, ask authentic questions, right? And to the ma'am, I request you please share your thought about today workshop. Fine, sir. It's a great opportunity. You are giving me a chance to speak. A very good morning to all of you. Firstly, I would thank Ms. Leila Jacob, who had been a source person to definitely organize such a wonderful session for my school and students. And Sir Ravi Shankar sir, you also are given a great round of applause to handle the show so wonderfully. I mean, you handled everyone. Fine. So thank you so much, sir. Then we have founders and directors from Smart Circuit Foundation, Mr. Sachin Sharma, Saurabh Kaushal-ji, Raghav Sharma. They all were the speakers. Definitely, they have given wonderful ideas and innovative, sessions to ignite my students. And for all of your information, I am having many students who have been awarded for Young Scientist Awards. Among us only we have Muskan Gupta, who had been given last year award at national level by Inspire, Young Scientist. And this year also we have 3 students selected for that. So now the students who are connected with us, all of them are really interested, and they have that mind set up that they want to do something. So it is really very wonderful, and I wish to have such more sessions again. If we can coordinate with each other and we can have more sessions, those who are interested. Sir, it was open for everyone. So if any disturbance has been created, no, ma'am, that's not issue. That's children. Maybe sir, outer source might have taken that link and tried. So no, I just assure that next time. Yes, sir. Yes, ma'am. Next time, whenever we will have a session, I assure that we will have only selected students who really wish to hear and learn something. Yes. Right, sir? Thank you, everyone, once again. Ma'am,
Wing Commander sir was also there in this workshop. And hello, can you hear me, ma'am? Yes, sir, we can all hear you. Yes. Yeah, Wing Commander Sanjay Rajgopal sir was there from Kerala. Yes. Wing Commander sir, a very good morning to you, and definitely we heard very good from you in the beginning. So it was really a wonderful hearing you, and definitely with patience you had conducted the entire show. Rather started it with a wonderful, I think, start. Yes. Now, a student, you can post your question in the message box. So Raghav ji will address your questions. And in the meantime, I request Leila Jaka ma'am to please share few words to the. Yeah. A very good morning to all of you. I am really delighted. I don't know how to explain because I can tell about our Saurabh sir as well as Raghav sir, the mobile encyclopedia. No other word I can use for them. It was really interactive, very enriching, empowering. More than that, I have seen how the children are already asking the question. The curiosity, I salute, and a big salute to the principal ma'am for organizing this workshop over there. And I was asking ma'am for a long time, but she said exam is going on. But your effort is highly appreciated, ma'am. And you know that our IDVM stands for Igniting the Dreams of Young Minds. And I would like to ask you the name of the students you have already mentioned who has already got the award. We would like to appreciate them with the support of our founder, Ravi Shankar sir. I think Ravi Shankar sir will also agree with me. And a big salute to our Wing Commander Sanjay Rajgopal sir, because sir, you have already made the interactive session in such a manner that you ask us different questions and you have already aroused the curiosity of the children. This way, our IDVM Foundation will be moving forward with the help of such a type of children and the supporting and constant effort of the principal like Yogesh ma'am. Thank you so much and have a nice day ahead. Yes. Thank you, Big salute Wing to. Commander sir. I minute. Sir, for today, give me a minute, sir. Saksham, Uppal, Muskan Gupta, Ashutosh Verma, Palak Gupta, Archit Gupta, Simran Getcha, and Love and Kush Mittal. They were the very active students. So I am having the name, those who were really listening carefully. Yes. मैम आपको एक बता के खुशी होनी, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ कि राघव शर्मा जी और सौरभ कौशल जी और सचिन शर्मा जी और विंग कमांडर सर की टीम दुबई में भी एक वर्कशॉप एड्रेस करने जा रही है फरवरी महीने में। इनका एक शेड्यूल है, अभी वो उसका टाइम डेट नहीं आया है, उसके बाद ही लोग एड्रेस करेंगे। दे आर वेरी ग्रेट साइंटिस्ट और भी आप देखो क्या संडे का दिन है फिर भी उन्होंने अपना पूरा टाइम निकाला और वो हर क्वेश्चन का आंसर किया जो बच्चों ने रेज किया। ग्रेट, रियली ग्रेट सैल्यूट फॉर। सर एक क्वेश्चन है बच्चे का, वो आंसर कर दूं? हाँ प्लीज प्लीज आप प्रोसीड कीजिए। सक्षम उत्पल, इफ एनी बैरियर कम्स इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट प्लीज म्यूट योर माइक। सब अपना माइक म्यूट रखें। मैडम प्लीज म्यूट योर माइक। I think from disturbance. There's one question from Saksham Uppal. If any barrier comes in front of a satellite, then what could happen? देखो होता क्या है, जब हम सैटेलाइट ऑर्बिट में भेजते हैं तो सब कुछ प्री डिफाइंड होता है, उसका ऑर्बिट और ईच एंड एवरीथिंग। इवन की जो एस्टेरॉइड होते हैं ना, यू नो लास्ट वीक मैं भी एस्टेरॉइड को हंट कर रहा था। एक पूरा सॉफ्टवेयर होता है कि एस्टेरॉइड कैसे ढूंढें। तो जो कुछ टेलीस्कोप्स हैं वो फोटोज लेते हैं और वो फोटोज अक्रॉस द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हर पर्सन को कि आप एस्टेरॉइड को ढूंढो, हमें बताओ। तो जैसे हम एस्ट्रोइड को ढूंढ के उनको बताते हैं, वो एस्ट्रोइड का भी पाथ ट्रैक कर लेते हैं सो दैट वो सैटेलाइट के साथ कोलाइड ना हो जाए। तो हर एक चीज का पाथ सबको प्री डिफाइंड होता है कि ये एस्ट्रोइड इस पाथ पे जा रहा है, सैटेलाइट इस पाथ पे जाएगा। फिर भी इन एनी चांस अगर कुछ ऐसा होता है तो हम उसका ऑर्बिट अर्थ पे बैठे बैठे ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे ऑर्बिट में, मतलब उसके नियर बाय में, सो दैट वो कोलाइड ना कर जाए किसी भी ऐसे अननोन चीज के साथ। बट वैसे चांसेस है वेरी मिनिमम, क्योंकि हर चीज हमें पता होता है कि कौन सा एस्ट्रॉइड किस बेल्ट पर है, वो कितने स्पीड से मूव कर रहा है और कौन से ऑर्बिट में है। इवन कि जब इंडिया ने चंद्रयान मिशन मंगलयान मिशन लॉन्च करना था तो उनको सिर्फ 4 मिनट का विंडो मिला था।
4 बजे से लेके 5 मिनट का विंडो, 4 बजे से लेके 4:05 के अंदर अंदर आप अपना रॉकेट को लॉन्च करो, अदरवाइज ऊपर से डेब्रिस भी जाएंगे, सैटेलाइट भी जाएंगे, तो जब आप ऊपर जाओगे तो आप कोलाइड हो जाओगे। तो उनको 5 मिनट का विंडो मिला था, उसके अंदर अंदर लॉन्च करना है। तो सब कुछ ये चीजें पहले से डिफाइंड होती हैं। पोलर सिंक्रोनस लॉन्च Excuse me, sir. यस Excuse me, sir. ये बोलो बेटा बोलो। सर जैसे मिशन मंगल में दिखाया था कि मिशन मंगल में दिखाया था कि बीच में उनका वो एकदम से शूट अप नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से उनकी स्पीड धीरे हो गई थी। हाँ। तो फिर बाद में एक स्पेस में ड्यू टू सोलर रेडिएशन, हाँ सोलर रेडिएशन से क्या हुआ था, उनकी स्पीड, क्योंकि उन्होंने, आपने देखा ना एक सेल टाइप उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया था, सो दैट सोलर रेडिएशन से उनको पुश मिला और उनकी स्पीड फास्ट हो गई थी। सर तो सर उसका उनको नहीं पता था पहले से। देखो कुछ फैक्टर्स का ना, कुछ देयर आर सम नोन फैक्टर्स, देयर आर सम अननोन फैक्टर्स इनटू द स्पेस। तो कुछ चीजें ना जब स्पेस में एक्चुअल मिशन हो रहा था तो वहीं से यहाँ से कुछ मॉडिफिकेशन भेजी जाती हैं कि अब ऐसा हो रहा है तो ये चीजें करो। Sir, I want to talk with Sanjay sir. Okay, Sanjay sir is, I think he is present in the meeting. I have to Yes, ask him. Sanjay sir, are you there? Dr. Wing Commander Sanjay sir, I think he is. He's there. He's there. He's there. Yeah, he's there. He's there. Good morning, sir. Good morning. सर आपने क्वेश्चन पूछा था सर, स्टैचू ऑफ यूनिटी सर वेस्ट ऑफ मनी है या वेस्ट ऑफ मनी नहीं है सर? तो सर एक सर मेरे हिसाब से एक तरफ से सर वो वेस्ट ऑफ मनी भी और एक तरफ से सर नहीं भी। सर वेस्ट ऑफ मनी इसलिए नहीं है क्योंकि वो सर वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टैचू सर है, और वेस्ट ऑफ मनी इसलिए है सर क्योंकि सर जो 3000 करोड़ लगे सर, वो सर हम लोग जो मतलब पुअर पीपल है सर उनको भी दे सकते हैं सर, मतलब उनकी हेल्प कर सकते थे सर। बहुत बढ़िया सोचना है। लेकिन एक चीज आप सोचिए अंकित, अगर आपके पास में 1000 रुपए और आप बाजार में जाकर एक आइसक्रीम खरीद के खाओगे। सर एक बार रिपीट करें सर आप। अगर आपके पास 1000 रुपए हो और आप बाजार में गए और आपने एक आइसक्रीम खरीद के खा लिया, तो आपके पास 1000 में से मुश्किल से 20-30 रुपए खर्च हुए, तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये सोचिए कि अगर आपकी जेब में सिर्फ 50 रुपए हैं और आपने बाजार में जाकर आइसक्रीम खरीद लिया, तो सब लोग और आपके मम्मी डैडी सब कहेंगे कि आपने तो वेस्ट कर दिया। इसी तरीके से एक देश के लिए 3000 करोड़ रुपए बहुत छोटी सी चीज होती है। So these are small things we should not worry about. If we want to make another hospital, we still can find out 3000 crore rupees. Okay. Ashutosh, Yes, I would interrupt. Sorry. Actually, there are many other ways by which we can save money. You all spend on crackers. You all spend on many more other unwanted things. This means the liberty of statue is a, I would say, shaan hai hamare uski world ki. So we must look at it ki we are able to see such a wonderful thing for us. Right. So beta, we can see ways where we can save money to help the poor, I think. And we should have few things on which we can look forward कि हम इतना ज़्यादा बड़ा innovative और इतना अच्छा construction या imagination या ideas से unique तरीके से कोई चीज establish कर सकते। Yes, right? yes, तो बेटा ma'am. ये session है आज, session Yeah, इसलिए है कि आप कितना अपने दिमाग से सोच के वंडरफुल चीजें, आप भी एक ऐसा आइडिया लीजिए, डेफिनेटली वी विल बी एबल टू हैव दैट विद अस। Okay, ma'am. Yes, Raghav ji, you have time to answer few questions, or should we? Yeah. What do you think? Yeah. I think there is a question by Vaishnavi Devan. Yeah. Vaishnavi, ma'am, you can पिछले 2 घंटे unmute से राघव yourself जी and और ask संजय directly, सर और Vaishnavi. सौरभ जी कनेक्टेड हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास टाइम है तो आप प्रोसीड कीजिए, नहीं तो यहीं पर कंक्लूड करते हैं।
Yes, you can ask the question, students. No problem. यस, पूछो सर, तैयार है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक वैष्णवी सर इस साल की हमारी एक इंस्पायर की अवार्डी है, जो अभी उसका सिलेक्शन हुआ है, बहुत ही अच्छा उसका प्रोजेक्ट है जिसे उसे स्टेट लेवल और फिर नेशनल लेवल पे करना है। शी हैड अ क्वेश्चन, वैष्णवी इफ यू आर देयर यू कैन आस्क। I think she discontinued. She wanted to ask ki, I want to continue the question of Saksham Uppal Bhaiya. So I think Saksham she is got the asking, answer. can we use laser light to crush it? Actually क्या होता है, स्पेस में कुछ भी destroying thing अभी तक प्लेस नहीं की जा रही है, because suppose कोई कंट्री है, सपोज चाइना, वो बोलता है कि मैं स्पेस में ना एक लेजर लाइट लगाता हूँ, सो दैट डेब्रिस को वी कैन बर्स्ट, बट यू कैन नॉट नो द इंटेंशन ऑफ दोस कंट्रीज ना, वो क्या पता यूएसए का कोई सैटेलाइट को बर्स्ट कर दे, सो यू कैन नॉट प्लेस एनी वेपन इनटू द स्पेस, so there are some strict टर्म्स फॉर दैट कि आप क्या क्या चीजें ऑर्बिट में भेज सकते हैं। सो आपको कोई भी कंट्रीज अगर लॉन्च करना है सैटेलाइट, वो सब चीजें डिस्क्लोज करना होगा। अगर वो नहीं करता तो वो उसका मतलब उसके ऊपर कुछ एक्शंस भी होते हैं, प्रोविजन भी है काफी, तो इसलिए कोई भी वेपन या कोई भी चीज ऐसी कुछ अलाउड नहीं है। हाँ, अगर कोई लाइक डेब्री को रिमूव करना है तो उसके लिए भी रिसर्च चल रही है कि क्या चीजें हम प्लेस करें स्पेस में, सो दैट जो एस्टेरॉयड डेब्री जो हमारे सैटेलाइट को या किसी को भी चीज को हार्म पहुंचा सकते हैं उनको हटाएं। Fine. I think Vaishnavi, you are there. Vaishnavi, you have joined back, so if you have any doubt, you can ask. आप पूछ सकते हो राघव सर से, मैं उनके पेशेंस को सैल्यूट करूंगा कि 2 घंटे भी हो गए फिर भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, और संजय सर भी साथ में है, ये बहुत बड़ी बात है। 2 घंटे तक एक मीटिंग में वो भी वर्चुअली जुड़ना बहुत बड़ी बात है। This is one question from Gagan. Yes. चंद्रयान 2 सर फिर से सर लॉन्च होगा या सर चंद्रयान 3 की प्लानिंग हो रही है। आई थिंक उसका जो बजट एलोकेट था वो हो चुका है, बट अभी मुझे करंटली नहीं पता कि वो कब बनने वाला है। सो होगा चंद्रयान 3 भी। एंड दिस वन मोर क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोपल्शन यूज्ड फॉर सैटेलाइट प्रोपल्शन? क्या होता है कि जैसे हमारी कार है, उसमें जो हमारा फ्यूल रहता है पेट्रोल रहता है, ठीक है, बट जो सैटेलाइट में फ्यूल रहता है हाइड्रोजन फ्यूल रहता है मोस्टली, उसकी हेल्प से सैटेलाइट वर्क करता है। व्हाट विल बी द मोटो ऑफ चंद्रयान? चंद्रयान 3 का मोटो आई थिंक वही होगा जो चंद्रयान 2 नहीं कर पाया, हमें रोवर को प्लेस करना है ऑन द सरफेस ऑफ मून। अच्छा स्टूडेंट, एक टास्क देता हूँ आपको, अगर आपको अपना सैटेलाइट बनाना है तो आप क्या सैटेलाइट बनाने वाले हैं? आप चैट में लिख सकते हैं, कमेंट में। इफ यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ सैटेलाइट, सो व्हाट योर सैटेलाइट विल डू इन स्पेस, यू कैन टाइप इन अ चैट। ग्रेट, awesome question, Raghav ji. Yes, Nisha Gupta, yes, solar panels are also there, but 95% the solar panel is used to give the power to the electronic system, but अगर propulsion है तो it means suppose कभी कभी क्या होता है कि अगर स्पेस में क्या रहता है, अगर कोई चीज सीधी जा रही है ना, सीधी जाती रहेगी, वो कभी मूव नहीं करेगी, तो propulsion मेथड चाहिए उसमें सो दैट वो ऑर्बिट में ही रहे। लाइक थोड़ा सा उसको राइट साइड से प्रोपल्शन किया तो वो थोड़ा लेफ्ट में हो गया, सो उसको पूरा एक ट्रेजेक्ट्री मेंटेन करना पड़ता है, अपना पाथ मेंटेन करना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है वी हैव टू चेंज द पाथ, ऑर्बिट भी चेंज करने पड़ सकते हैं। You got some answers. There are some answers which children have written. Yes. Yeah, Archit Mishra, I will make satellite to study the life of other planets. Very good. You know, एक आपको मैं इंसिडेंट बताता हूँ। एक हमारे पास एलियंस का एक सिग्नल डिटेक्ट हुआ था 1998 में, तो एक सिग्नल आया था, तो हमारे अर्थ के जो साइंटिस्ट हैं उनको 10 साल लगा उस सिग्नल को डिकोड करने के लिए। तो वो जब सिग्नल को डिकोड किया, वो था सिग्नल, मैं आपको चैट में लिख के दिखा रहा हूँ, फ्रैंटिक प्लिया फॉर हेल्प। तो मतलब फिर अर्थ में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने खोज निकाला कि वो सिग्नल आया कहाँ से था, तो उन्होंने पता लगा हमारी जो नेबरिंग गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, विच इज 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स अवे, तो मतलब उस सिग्नल को यहाँ तक आने में लाखों साल लग गया था, और वो सब सिग्नल डिकोड हुआ, वो था फ्रैंटिक प्लिया फॉर हेल्प। मतलब कोई प्लैनेट था एंड्रोमेडा गैलेक्सी में, वो प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो रहा होगा, तो उन्होंने एक रेडियो सिग्नल ब्रॉडकास्ट किया था थ्रू आउट द यूनिवर्स की अगर आप कोई हमारा मैसेज देख रहे हैं तो हमें बचा लो, बट हमें वो लाखों साल बाद मिला। तो आप ये सोच सकते हैं कि लाखों साल पहले भी कोई सभ्यता ऐसी होगी जो रेडियो कम्युनिकेशन यूज कर रही थी। सो देयर इज अ चांस फॉर लाइफ ऑन एनी काइंड ऑफ अ प्लैनेट, बिकॉज अभी हम सिर्फ मिल्की वे की बात कर रहे हैं, और मिल्की वे गैलेक्सी के जैसी ऐसी मतलब करोड़ों गैलेक्सीज हैं, हर एक गैलेक्सी में करोड़ों खरबों प्लैनेट्स एंड स्टार्स हैं।
We There have is an answer written, a free recommendable eco-friendly satellite by Saksham Uppal. Then, okay, very good. sir, my satellite will study garbage in ocean Very by good. some Love Mittal or Kush Mittal. Yeah, even you know this idea garbage in ocean अभी 2-3 years पहले किसी student ने दिया था. I think वो they are working on this. This is a very good idea. Archit Mishra, yes, this is a chance because you can see एक telescope हमने जो place किया है space में, that is a Hubble telescope. वो हमें हमेशा galaxies की picture भेज रहा है, ठीक है? So there is a chance कहीं पे भी life तो होगी ही. एक गैलेक्सी में एक लिविंग प्लैनेट. यस, दिस वन गैलेक्सी में वन लिविंग प्लैनेट हो सकता है, एक गैलेक्सी में हजारों हो सकते हैं, बट अभी तक हमने देखा नहीं है, तो जब तक हम देख नहीं पाएंगे. यू नो काफी कंट्रीज है जिनको पता है एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, बट वो अभी तक सिविलियंस को नहीं बताना चाहते, बिकॉज अगर आपको बता दिया ना कि एलियंस है तो सब पैनिक हो जाएंगे कि वो एलियंस है, कहाँ पर है, हजारों क्वेश्चंस आएंगे. सो अभी एक इजराइल के किसी एक्स स्पेस पर्सन ने एक डिस्क्लोज किया था कि इजराइल एंड यूएस और एलियंस का एक फेडरेशन बना हुआ है, दे आर वर्किंग ऑन देम. अगर वो एक टाइम पे आने पे सब चीज डिस्क्लोज करेंगे, आई डोंट नो कि ये रियलिटी है या नहीं है. वी हैव सीसीटीवी कैमरा फ्रॉम लेजर लाइट. इवन आई डोंट नो अबाउट यू नो एवरीथिंग. मुझे जितना पता है मैं उतना ही बता पाऊंगा. रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू हैव टू रिसर्च इट ऑन गूगल. सर व्हाट अबाउट एरिया 51? एरिया 51 कहते हैं कि यूएस में एक जगह है जो मैप में नहीं आपको दिखेगा. एरिया 51 में दे आर वर्किंग ऑन सम एलियन टेक्नोलॉजी. यू नो मैं 3 साल पहले एक नील आर्मस्ट्रॉन्ग के जो ट्रेनर रहे हैं कैन जॉन्स्टन, उनसे मिला था. तो मैंने उनसे एरिया 51 के बारे में पूछा था, तो उन्होंने अपना एरिया 51 का मुझे कार्ड दिखाया था. एक्चुअली उस कार्ड का मैंने पिक्चर लिया था, उसके बाद मेरा मोबाइल पानी में गिर गया था, तो वो पिक्चर आई गॉट डिलीटेड. दैट इज अ वेरी यू नो बिग मिस्टेक आई थिंक आई फाउंड इन माय लाइफ. लाइक वो मेरे पास एक पिक्चर था एरिया 51 का, उनके कार्ड का. आई डोंट नो हाउ इट गॉट दैट कार्ड पिक्चर. If any satellite has been captured, if any captured have black hole, actually जो black hole जो है हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में हमारे अर्थ से 25,000 लाइट ईयर्स दूर है, तो उतनी दूर तक हम पहुंच ही नहीं पाए हैं, तो देयर इज नो चांस. सर ब्लैक होल सर आप सर ब्लैक मार्स के आगे सर एक सर मेरी एक सर 4th क्लास में बुक थी, तो सर उसमें मैंने देखा था कि जो मार्स प्लैनेट है सर उसके सामने सर एक ब्लैक होल टाइप से उसका सर. नहीं, मार्स तो हमारा पड़ोसी, अगर उसके सामने हुआ ना तो वो ब्लैक होल अभी तक हमें खा जाता. इट कैन कंज्यूम एवरीथिंग व्हिच कम्स नियर बाय, हर लाइट को कंज्यूम कर लेता है. तो जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ब्लैक होल है, दैट इज वेरी फार अवे, हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है. मल्टी ब्लैक होल्स मेनली बनते कैसे हैं? इवन यू नो आई डोंट नो, बिकॉज ये रिसर्च का इशू है, रिसर्च का टॉपिक है. डेली न्यू रिसर्चेज आती हैं, बनते कैसे, बिकॉज अभी तक साइंटिस्ट यही पता लगा रहे हैं कि ब्लैक होल कैसे डेवलप हो रहे हैं. ब्लैक होल है, वार्म होल है, व्हाइट होल्स हैं, देयर इज मेनी थिंग, एंटी मैटर, ब्लैक मैटर, तो बहुत सब चीजें हैं यूनिवर्स की अगर बात की जाए. आई थिंक काफी क्वेश्चंस के आंसर हो चुके हैं अभी तक, और किसी को कुछ कहना है? या यस बेटा, काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर राघव सर ने किया है, और राघव सर आप लोगों के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे. तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार अपने माइक एक ही बार में पूरे ऑन करें और एक बार भारत माता की जय बोलें, जिसकी आवाज पूरे दुनिया में जानी चाहिए. सभी बच्चे एक बार में माइक ऑन करेंगे और बोलेंगे भारत माता की जय. 3, 2, 1. भारत माता की जय. ठंड में भी जय भाई जय. ठंड में भी यूपी में जोश आई है, ये बड़ी बात है. ठंड में भी यूपी में जोश आई है. यस राघव जी, जोश रहती है. यस यस, I can see so many people. Thank you so much, sir. Thank you so much, everyone. With folded hands. बहुत अच्छा सेशन रहा सर. We don't know you all, but it seems that we know you very well. We do. Yes, राघव सर और Yes, ma'am. Yes, ma'am. कमांडर सर और सौरभ कौशल सर
आपके परमिशन से क्या मैं मीटिंग को बंद कर सकता हूँ? Yeah, sure, sir. Yeah, please. So I request, ma'am, I am going to close the meeting since we are Yes, having sir. another meeting coming at 12 o'clock. So this is going to be end here, but this is not the end. अभी ये स्टार्ट हुई है और एक इतिहास खड़ा करना है. सौरभ सर को और अपने राघव सर और सचिन सर तीनों आपके साथ है. विंग कमांडर सर भी साथ है. एक अच्छी सैटेलाइट बनाएंगे आपके स्कूल से और उसको लॉन्च किया जाएगा. थैंक यू मैम. थैंक यू. Thank you so much, sir. Thank you. Okay, bye bye. Take care. All. Have a nice day. Okay, bye. Okay, thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, जी. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.